1998. My father was in Japan for a long time at that time. Then he came back, then he had me. When I was 9 years old, he passed away. He had left some shares and an apartment. So my mother used to look at the newspaper and make faces. So when I was 11 or 12, I started seeing what is what. And at the age of 16, I wanted to sell some shares, but my mother will not allow me. So I shorted it in the Badla market. And a lot of people in our uh, community are in this business of broking. So from that time, I knew how to shop. Then I studied, became a chartered accountant. By the age of 21, I was a CA. All the while I was speculating. Then I went off to Dubai, Abu Dhabi, Hong Kong. From there also I was trading. In 86, I came back and went to the ring. There, at one point of time, they chucked me out. Okay, you are a very dangerous player, and so on and so forth. And every time I would on 2 3 crores at that time, I would lose it, on lose it, on lose it. Then I realized this is not the right way. Certain portion should be hedged all the time, irrespective of the markets. So that became the journey. In 2000, in the tech boom, I made money both the ways. 2008, I made a super windfall. And then 2012, Anil Ambani and I are messing up. And in 2013, income tax raid and underworld and whatnot. And 2015, I got an angioplasty, so I took it easy. Now, the somebody asked me why and how you do things. Suppose if I make 100 rupees, 60 rupees I put it in debt mutual funds. 25%, 25% I invest in shares. 5% is my expenditure. And 10% I do what I do. It's not with me. Now, with the 25 rupees shares worth of shares I buy are unknown MNCs. I keep on investing. I don't know the rates. I have instructed the broker to buy certain quantity as per the profit every. And I have six straddles, six straddles which are continuing for 6 years. And I wish I will be able to continue forever because it's such a juicy business. It's unbelievable. So I hope I have answered what was asked, what I do with my money. 60% debt mutual, 25 shares, 5% expenditure, 10% don't ask me or what I do. So that's that. And I buy only MNCs and nothing else. I don't buy any Indian company. If you tell me it will double in 1 month, then also I'll not buy. I'm scared of Indian promoters. Generally, they are very dicey, and I don't want unwanted pain in my life.
आई डिड वंस और ट्वाइस, सारा पूरा बुक्स ही रॉन्ग था, तो तब से बंद कर दिया. नाउ मिस्टर सुहास, you had a question, right? Yes, sir. Yeah, Good evening, Sharadji. good evening. Good evening, Sharadji. First of all, I'd like to thanks to you to invite me on this space, and second to giving me the chance. Sharad sir and everyone, I'd like to inform everyone as I am the big fan of Sharad sir, Never said. and I really like what Sharad sir are saying in front of everyone, whether it's right or wrong. But the way which Sharad sir is saying, it's honestly appropriate. I'm listening Sharad sir since last couple of months and सर observed सर lot of आप things. वो हाँ छोड़िए ना, चलो आप मैं प्रेसिडेंट क्वेश्चन पे आता हूँ शरद सर. हाँ मेरा ये क्वेश्चन था. मैंने एक्चुअली रिलायंस के 12 लॉट शॉर्ट किए थे, सॉरी पुट बाय किए थे. उसमें से दो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, दो में अप्रोक्स 62 to 65,000, जो कि 2 days बिफोर फॉल हुआ था उसमें, फ्राइडे का. और अभी मेरा क्वेश्चन ये है सर, मैंने अभी 2400 का पुट बाय किए हैं 10 आज. आजकल एवरेज किए टोटल 81 मेरी एवरेज कॉस्ट है. मैंने नेकेड पुट बाय किए है, आई डोंट हैव एनी हेज पोजीशन. तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा व्यू तो एक्चुअली फुल्ली बेरिश है, बट लाइक एग्जैक्टली विच पोजीशन तक के लिए, मतलब कौन से पोजीशन के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा? नहीं, समझा नहीं. नहीं मतलब कवरिंग के लिए कैन आई ऐड मोर और वेट नहीं फॉर नहीं 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 नहीं, डाउन? डोंट ऐड मोर. वो जितना है ना पूरा पैसा आ जाएगा. ये ये जो एक्सपायरी है ना 28 को है, जी हाँ, 28 जुलाई का ही है. और आज 4-5 तारीख ही हुआ है. वेट करो ना, बहुत नीचे आ जाएगा, बहुत ओके. नीचे आ जाएगा. और सर शरद सर, मुझे इसके लिए हेज करने की जरूरत है? अभी एक्चुअली मैंने नेकेड पुट बाय किया है. तो पुट नेकेड ही होता है ना. नहीं नहीं मतलब व्हाट आई वांट टू से एग्जैक्टली, मैंने कोई कॉल उसके अपोज में बाय नहीं किया है रिलायंस का एज के लिए. नहीं, तो इट इज क्यों? फाइन. और आप चुपचाप बैठे रहो ना, वो थियरी सब मत लगाओ इधर. ओके सर, थैंक यू. यू विल और मेक कोई टन्स ऑफ मनी, टन्स ऑफ मनी. ऑल राइट. एंड वन मोर क्वेश्चन सर, इफ यू कुड एडवाइज एनी वन मोर स्टॉक which I can short or put by, I am looking to approx 3 lakhs. टाइटन, फिर एसआरएफ, फिर पोलीकैब, ये सब कचरा पट्टी का ले लो ना यार, न्याल हो Oh, जाओगे. okay sir, pakka. Thank you sir, that's it from my end. Thank you and thanks for your time. Have a great day everybody. Yeah. I'll leave the Uh, speaker. yeah, thank you. Today the scenario is the market went up to over 16,000, and then it fell very badly. So I don't know anything about charts, but in my mind I have visualized that tomorrow fall will be at least of 400 points. Why I am saying this? वो 200 पॉइंट ऊपर गया, 250 पॉइंट नीचे आया, 450 का मूवमेंट हुआ. और अभी देखे तो gold is down 2%, copper is down 3.5%, crude oil is down 10%, नेचुरल गैस वो सब वो ठीक है. दूसरा बात है, ये जो अपना क्या बोलते हैं, यूएस मार्केट इज डाउन, इट्स डाउन 639 पॉइंट्स. एंड उसका लो का लिस्ट आप सुनेगा ना, अब हिल जाएगा. जनरल मोटर्स, सिटी ग्रुप, बैंक ऑफ अमेरिका, कैटरपिलर, इंटेल, फोर्ड मोटर, डाव, सिस्को, डियर एंड कंपनी, कॉर्निंग, गुडियर, जेपी मॉर्गन, 3M, फिफ्थ थर्ड, ये लंबा लिस्ट है. रियान एयर, माइक्रोचिप, फिर रैम्बस है,
एनवीडिया है, तो अपने कौन सा खेत का मूली है भाई? काहे को तू मटकावे, काहे को छापम छापी करे? फिर मैंने बहुत सोचा ये कौन है, तो पूरा गांव है वो धनबाद से ले रहा है, कोई वेस्ट बंगाल से ले रहा है, कोई नॉर्थ ईस्ट से ले रहा है, सब पब्लिक ले रही है। इनका क्या हाल होगा वो लोग ही जाने। बट द पॉइंट इज थिंग्स आर वेरी बैड, very bad. Don't look at Nifty. It's misleading you. And with gold down so much, with oil down almost 10%, तुम क्या बुल रन करते है? फिर बोलेगा ऑयल गिर गया, अपना डेफिसिट कम हो। अरे डेफिसिट कैसा कम होएगा? डॉलर रुपी देखो, वो 2-3 दिन में 80 हो जाएगा। वो सुब्बा राव जी बोला था कि भाई फ्री वो छोड़ दो रुपी को, तो उसकी एडवाइस माने तो 80 तो हो ही जाएगा। हाँ, मैं थक गया। बस, समझ भाई, समझ भाई। ओके आनंद भाई, बोलिए। हेलो डॉक्टर अमित, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर, आ रही है। तो उठाता नहीं आनंद। ओके, श्रीनी, यू स्पीक। Yes, sir. Good evening, everyone. Good evening, Sharad sir. Uh, sir, अभी I don't know. I mean, so, quick summary results का जो देख रहा हूँ मैं, Marico has announced very scary numbers. मतलब in the business update. So I don't go by P&L and I look at consumer trend, consumer volume, and all. So they're saying operating revenue mildly up. Sir, last year same quarter तो COVID lockdown था. And most of the big brands, very popular brands, Afola and this and that, Parachute, they're saying volume decline. And जो भी है ग्रॉस मार्जिन ये वो सब वर्ड्स में है, बट नेट मार्जिन बोल रहे हैं कम है। तो मैं मतलब इशारा काफी है। So I think it's very bad sign that economically in April, May, June. So we have the numbers now, sir, is my only that if such basic products, cooking oil, hair oil, these things are not are declining in volume and in revenue. So sub story अभी out of window कि inflation से nominal growth आएगा, blah blah blah, वो सब I think stories will get over very fast. Auto sales का update आया, so I just want to highlight to people we are the Indian consumer at best is in 2017, in from a volume point of view. So eventually, valuations maybe you should be we should be looking in those years. What were these companies' domestic sales valued at, and then add the export sales and all that. So I mean, the numbers are now coming out, and they're as ugly as we were afraid of. So. Agree, sir. Things are really bad. So I don't know if anyone is now debating it. अगर कोई है, happy to answer specific. I've brushed up a bit on categories and all. So कोई specific counter है तो happy to answer. No, and Srinivasan, LIC on somewhere in June had said that they will post results on 30th of June. ओके, हाँ वो आया ही नहीं है, बोलो। सर, पॉलिसीज बिक नहीं रहा है. I'm on the board of a broker. So we are two-wheeler and motor health focused. Things are very bad. Life and all. Because sir, life policies are basically India may function of savings. हम्म, Unlike global markets are term insurance big है. Everyone knows in India, especially LIC business. So basically savings product बेच रहा है वो insurance के umbrella में. Savings टूट गया है sir. Can't use English words anymore. Have to use Hindi. Sorry for anyone whose sensibilities are टूट गया है sir. Savings. हम्म, So very bad scene on which is 68-70% of the policy volume, and it is 90-95% of the profit makhan. हम्म। ब्रोकर के लिए भी, इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी.
So tough. And these products are going under, sir. तो ये पता नहीं क्या बिक मतलब fancier categories का चांस ही नहीं है. हम्म, अच्छा, आई एम लुकिंग एट कुकिंग ऑयल, बाथरूम संडास करने के बाद साबुन धोने वाला ब्रांड्स. मतलब हम्म, आई एम लुकिंग एट द हार्डेस्ट ऑफ हार्ड कैटेगरीज, हम्म, जहाँ जहाँ डिमांड डिस्ट्रक्शन मीन्स वेरी टफ हम्म, लॉन्ग. मतलब हम्म, आपने पहले प्रिडिक्ट किया है सर. सो बट नाउ नंबर्स आर टेलिंग मी कि लॉन्ग मंदी. कंज्यूमर्स गॉट वो लाइक माइक टाइसन पंचेस समवन, नो, हम्म. धनाधन 4-5 पंच मारा माइक टाइसन ने, तो वैसा हो गया. कोविड सेकेंड वेव फर्स्ट वेव ब्ला ब्ला, उसके पहले भी मरीज ही था इकोनॉमी. नहीं, सो but Mike Tyson when he punches 4-5, सामने वाले का हालत क्या होता है? जिंदगी में उठता नहीं है दोबारा. मैं वही बोल रहा हूँ सर, काफी ये कंज्यूमर लोग वापस नहीं आ पाएगा सर इनटू कंज्यूमिंग क्लास नेक्स्ट 4-5 years. And also the economic and social conditions are so bad. It's unbearable. See, for me, it's okay to be in my bedroom all the time, speak, laugh, eat. But for people who are working and all, life is tough, yeah, very tough. हाँ श्रीनिवासन बंद क्यों हो गए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, वो एको अवॉइड करने के लिए बिल्कुल सर. सो people are putting a lot of hope on the laptop class, as they called, who can earn income by sitting at home or in some AC environment. But वो बहुत छोटा percentage है. India is very, I mean, we all know India. Yeah. कितना मतलब how far away from reality the narrative has gone is shocking. And sir, other update I have is, as predicted, the pump and dump narrative is moving to fifth gear. Today, very well-known fund manager is on long interview. He says his top holdings are Polycab, HCL Tech, and all, and he's saying this is a time to buy. Worst is behind us, and all this kind of stuff. Inflation is down, things will look up. All the sellers are done. जिसको बेचना था बेच दिया. So, this is very narrative. I'm a marketer. I know narratives when they're being spun. So No, yes. I heard a Cartoon Network on TV today morning recommending IEX. अरे यार, 20 रुपए का चीज को तुम 150 में क्यों लेने को बोलते है? वो धंधे में क्या है क्या? इट इज अ ब्रोकर. वो बिजली बेचता है और लेता है, इंटरमीडिएटरी है, तो काय का वैल्यूएशन होना चाहिए. And PTC is available at 75 rupees or 10 paid up. Better dividend yield, better company, bigger company. तो लोग IEX को क्यों लेता है? See, all said and done, mark my words. ये जितना भी ये चिंकू पिंकू है ना, जो ये 2 साल में चला था, वो सब 50, 100, 200 हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा. 110%. Because I have seen a 10 cycles. वो क्या बोलता है, जब ये टेक बूम आया तो वो सब वो किधर गया? सिल्वर लाइन ना ये ना वो भाग गया. ऐसा ही भाग जाएगा सब. और ये दीपक नाइट्रेट में वो क्या है क्या? व्हाट इज देयर इन दीपक नाइट्रेट? पहले 200 का भाव था. नॉनसेंस है ये. क्या बोलते हैं ये पोली के बड़े वायर बनाते है. अब कॉपर डूब गया, ये हो गया. काय को 2200 का भाव है. सो माय लिमिटेड पॉइंट इज, प्लीज प्लीज don't be long in futures. And if you are long, no, if you are holding any high price shares, unknown in the sense like Deepak Nitrate and all, get out. Get out. आंख बंद करके बेचो. ये पुली कैब है.
Mark my words, 100 rupees हो जाएगा. It won't happen or tomorrow or next week, but ultimately the target is 100 rupees. क्योंकि okay, so please save your money, buy good shares, and forget all this nonsense. क्या बोलते हैं भाई? Sir, just a quick point on valuations. Now, like the frontline blue chips, like Marico, I think highly of good brands, good business, blah. उसका पी 50 है, अब तक 53 53 पे टिका था ऑन द होप दैट अभी का अर्निंग्स बम्पर आएगा अप्रैल मई जून ऑफ 2021 सेकेंड वेव क्वार्टर विल साइकिल आउट एंड लास्ट 12 मंथ्स में ये वाला क्वार्टर आएगा विच शुड बी वेरी गुड. अभी ये 4-5% ज्यादा एट बेस्ट आएगा. दैट्स द हिंट आई गेट फ्रॉम द लॉन्ग प्रेस रिलीज. So if Marico will then correct at a PE level. If Marico corrects, maybe 20 P for a 3-4% growth, which is fair. It's not unfair. Or maybe 25 P. So levers maybe will go from 60 P to 30 P. Then I don't know what these current mid caps who are at 30, 40, many whose names we don't know, what businesses they do, we don't know. They will all एक zero at जाएगा, sir. My opinion. And I saw this happen live, sir, in 2008. I was on the wrong side of the trade then. It has been happening all the while. When I joined, there was a soya boom, soya companies. Then there was leasing companies. तो ये सब ये फैशन आता है, लोग फंसते हैं. मैं तो पहले से समझ गया था शेयर लेना पाप है और लेना है तो एमएनसी लो. मैं ये लिया था, सीमेंस लिया था, 182 में लिया था, मेरे को बराबर याद है. अब 5 लाख शेयर लिया था, तो अपने तो पागल था, 400 गली गली बेच दिया. 10-15 लाख रुपए, अरे 10-15 करोड़ आया था बेच दिया. But then I calculated, it went up by 380 times. So the point I'm trying to make is, please buy such shares. Don't go for this Reliance and ICICI. They'll never ever take you anywhere. Oh, पूरा time 400, 700, 300, 200, 100, 600 उसमें ही घूमता रहेगा, पूरा जिंदगी आपका निकल जाएगा. So shares only MNCs, small ones which can grow. I think one should do that only, nothing else. आनंद भाई बोलो, है क्या लाइन पे? समझ लाइन पे है क्या? हाँ आनंद भाई है ना सर. मैं एक्चुअली बाहर हूँ सर, मैं थोड़ी देर के बाद. अच्छा, तो आनंद भाई को ले. आनंद भाई नहीं है, ये कौन है? कमल भाई, अमित भाई, डॉक्टर अमित. हाँ, गुड इवनिंग शरद सर. गुड इवनिंग सम्राट. गुड इवनिंग सर. कुछ खास नहीं है, बस शॉर्ट करके बैठे हैं, मार्केट को देख रहे हैं गिरते हुए, और कुछ खास नहीं. Oil is down is just because I presume that demand has slowed down, irrespective of Russia not producing much of oil or exporting much of oil. So it is not really, doesn't look good at all anywhere. और आपने बताई है सब तो यूएस के टॉप नॉच कंपोनेंट्स जो डव के सब डाउन ही है. So nothing much to add for me. Gold, silver has also broken its important support level. पता नहीं है. I mean, I think everything is into tumble now.
बस एक यूएस डॉलर सर, आपको क्या लगता है सर, यूएस डॉलर अभी कल तो 80 हो ही जाएगा, लग ही रहा है, एंड देन इफ इट्स स्टार्ट्स फर्दर मूविंग अप, सो व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी देन? स्ट्रेटेजी क्या, डॉलर ले और क्या। ओके, नहीं मतलब इक्विटी मार्केट में फिर कुछ उल्टा गेम तो नहीं हो जाएगा कहीं पे? उल्टा मतलब अगर मान लो 82, 83, 84 चला जाता है डॉलर, तो इक्विटी में स्पर्ट तो नहीं आएगा कुछ? आएगा, पक्का आएगा। ओके, तो फिर क्या करना चाहिए सर फिर अपने को? आपको क्या लगता है सर, व्हाट्स योर व्यू लाइक? अब 12,000। नहीं वो तो मालूम है सर, आपका 12,000 आएगा ही आएगा, बट ठीक है सर, ठीक है। नहीं, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि आप एक बार बता रहे सर थे ना। नहीं, कमल भाई। हाँ भाई सर। मेरा एक ही प्रॉब्लम है हाँ। कि मैं बाजार के साथ में नहीं घूमता हूँ इतना जल्दी। वो भैंस के माफिक पड़ा रहता हूँ, क्योंकि पता है दुनिया गोल है। जो 18 महीने पहले भाव था वो आएगा, कुछ भी हो जावे, आएगा आएगा आएगा। तो काय को मगजमारी करने का। हाँ, ये बात भी सही है। रोज अपना व्यू बदलो निफ्टी के साथ, क्या नॉनसेंस है। ये निफ्टी है क्या? वो ये 18% रिलायंस है और 11-12% एचडीएफसी बैंक है। क्या नॉनसेंस है यार, इतना तो वेटेज है यार, क्या सही है। करने का। और हाँ, ये सॉरी सर। ये बच्चा लोग पूरा टाइम निफ्टी 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 निफ्टी, क्या है क्या निफ्टी। और मैं लिख के देता हूँ, जो भी निफ्टी खेलता है ना, 1 रुपया बनाता होगा तो मैं हार जाऊं। वो कुछ भी, कितना भी फेकम फाक करे, कोई पैसा नहीं बनाता है। एंड में खाली चार्जेस में ही साफ हो जाता है। अगर आपको मालूम होगा तो पर निफ्टी चार्जेस कितना है, 3-4 रुपया है। अरे पागल है क्या, मैं देगा उसको। मैं बहुत कंजूस आदमी हूँ इन रिस्पेक्ट ऑफ चार्जेस, ब्रोकरेज, इंटरेस्ट, ऐसा। तो मैं नहीं खेलता, आप खेलो। और मैं क्या बोलता हूँ कमल भाई, अभी यस सर। आपके सामने मैंने वो शहर के नाम सब बोले, हाँ। तो क्या अपने वहाँ हाथी है क्या? अपने वहाँ ये ऐसा कंपनी है क्या, सिटी ग्रुप और बैंक ऑफ अमेरिका ना, जेपी मॉर्गन जैसा है क्या अपना? नहीं है, सही है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर भी अपना झंडा लगा के खड़े हैं। एनीवे 12,000 100% आएगा आएगा आएगा। और एक दूसरा बात, ये 10 ईयर यील्ड यूएस में 2.81 हो गया। हाँ, बोलते हैं रिसेशन आएगा। बराबर है। हाँ, तो अपने वहां नहीं आएगा। नहीं, अपने यहाँ पे तो पहले हिट करेगा। अपने यहाँ पे तो जब आएगा ना, जब सब बर्बाद हो जाएगा, उसके बाद लोगों को याद आएगा कि अरे रिसेशन आ गया। जब आपका 12,000 आएगा ना, तब पब्लिक बोलेगा रिसेशन आ गया। नहीं नहीं तब नहीं, तब गलत बात। कमल भाई गलत बात। इंडिया में रिसेशन 2016 में आ गया। आप जितना भी नंबर देखेगा ना, ऑटोमोबाइल नंबर, ये वो सब नंबर्स आप उठा के देख लो, 2016 से रिसेशन चालू हो गया है। वो कोई नहीं बोलेगा, बट आप नंबर पढ़ो, नंबर देखो, सब घट रहा है। बात तो सही है सर आपका। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट इन दैट वे कि नंबर्स तो घट रहा है। कोई ऐसा नहीं है जिसको आप यू छाती ठोक के कह सकते हो नो एवरीथिंग इज गुड। नाउ व्हाट दे आर कंपेयरिंग नाउअडेज इज विद द कोविड लेवल्स। वो तो आई मीन अब उससे कंपेयर करके क्या मतलब है? उससे कोई मतलब ही नहीं नहीं है नहीं क्योंकि नहीं नहीं, वो ठीक है यार, उनको उनका काम, वो मतलब वो सब वो जरूरी है। गवर्नमेंट को चप्पल मारेगा नहीं तो लोग, तो वो लोग भी बराबर कर रहा है। बट माय पॉइंट इज 2016 से ही रिसेशन है अपने वहां। और
I can't differentiate between stagflation, वो ठीक है मालूम है, और डिप्रेशन ही है। आज किसी को भी मैं फोन करके बोलता हूँ चल भैया दे पैसा मेरा, ऐसा रोता है, तो एवरीबडी इज सूप यार, कोई किसी के पास पैसा नहीं है। हाँ, फिर शेयर बाजार वाले के पास बहुत पैसा है। नहीं सर, वो तो है ही, करेंसी मार्केट में रोटेट नहीं हो रही है, दैट इज फॉर श्योर, एंड people are, I mean, seriously into big soup, no doubt. कोई भी बिजनेस पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, बट दे पैसा चर्न आउट हो नहीं रहा। जब पब्लिक को 45 दिन लगता था, आज 90 दिन, 180 दिन तक जाता है पैसा। तो people are, I mean, there is lot of problems, no doubt about it. Ground reality is quite different when what stock market is talking about. नहीं, और सब लोग बोलते हैं मैं मंदी वाला है। अरे यार, कैसा मंदी वाला है यार? सर, मंदी में जितना पैसा बनता है ना, उतना और कहीं पैसा नहीं बनता सर। नहीं, वो ठीक है, पर मंदी वाला बोलते हैं मेरे को यार इतना सारा शेयर है मेरे पास में। तो सर, आपने शेयर भी तो ऐसा रखा है ना कि जिसने नाम नहीं सुना है लोगों ने, तो फिर क्या बोलेगा? नहीं, अरे यार, तो मैं क्यों रखूं रिलायंस और वो सब, पागल है क्या? सही है और सर। अपने मेरे को को अच्छा पैसा। हाँ, सुनिए ना बोलिए। सर, मेरे पास एबॉर्ड पड़ा हुआ है, काफी पुराना पड़ा है, उसको होल्ड करूं क्या है? मेरे को एक होल्ड सजेशन। हाँ, होल्ड होल्ड होल्ड। अरे इतना होल्ड बोल रहे हो, मेरे को डरा रहे हो भाई। नहीं, सच्ची बोलता हूँ, बेचना मत पागलों की तरह। ना ना, बेचूंगा नहीं मैं। अब पढ़ा रहे बच्चे ओके, के नाम पे कर दे ट्रांसफर। ठीक है सर, ठीक है, परफेक्ट, कर देता हूँ। दैट इज डन सर, डन। आज एसआरएफ शॉर्ट किया था सर, कवर कर लिया मैंने, लगता है जल्दी। वो पुट। छोड़िए ना, छोड़िए। हार्दिक भाई, हाँ बोलिए वो सर। अभी फटाफट बोलो, और केमिकल में क्या होएगा? केमिकल में सब नीचे है सर, फट गया है सबका भाव। बेंजीन ऊपर गया, फिर भी सब केमिकल नीचे आ रहा है, कोई माल नहीं बिक रहा है, किसका पेमेंट नहीं घूम रहा है। अभी ये दीपक का प्रोडक्ट का भाव 130 रुपया हो गया, 150 रुपया था गया हफ्ते में। माल नहीं बिक रहा है, वो कैसा भी डिस्काउंट दे रहा है। हम लोग का कंपनी का भी हालत वही है। 140 वाला 150 हो गया था सब केमिकल, अभी 130 135 में माल बिक नहीं रहा है। मार्केट में हालत इतना खराब है सर, पेमेंट ही नहीं घूम रहा है। सब ईरान से माल इंपोर्ट किया है, सबका फट गया है, सबका माल ही नहीं बिक रहा है। 120-25 का जो बाजार था वो सीधा हो गया 112-15, सब नुकसान में है सब। और 40 हो जाएगा तो हार्दिक भाई? क्या 40 हो जाएगा सर? भाव किसका? कोई भी प्रोडक्ट का, मेरे को मैं थोड़ी तेरे बाजार का है। अच्छा नहीं, अरे सर मैं आपका क्वेश्चन समझने का कोशिश कर रहा था। आप बोल रहे 40 हो जाएगा, मतलब देखो ऐसा है सर कि अगर आप, सिंपल एग्जांपल है, शेयर बाजार में आपने कोई स्टॉक लिया 115 120 में, अभी आपका माल सबको बेचने का ही है, तो क्या होएगा? बस वही हालत केमिकल बाजार में है। मतलब सब बाजार में ऐसा ही हालत है सर, केमिकल नहीं, बेरिंग बाजार में भी ऐसा ही हालत है सर। जो पेमेंट 60-70 दिन में आता था ना, वो 90 दिन के बाद में भी झगड़ा करके लेना पड़ता है। और केमिकल में सर एक एक ट्रांजेक्शन आजकल है ना, एक कंटेनर मंगाएंगे ना सर, पहले एक कंटेनर 20 टन का कंटेनर आता था, वो 16 लाख का आता था। आज वही एक कंटेनर 80 लाख रुपए का आता है, 80 लाख रुपए का एक कंटेनर। अभी आप सोचो सर, वो 80 लाख का एक कंटेनर का पेमेंट घुमाने को कितना टाइम लगता है, कितना अमाउंट है, बैंक का इंटरेस्ट क्या है, कुछ नहीं। हार्दिक भाई, नहीं आप मतलब मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। खत्म हो जाएगा आज सब लोग। आज समझो 120 का भाव है, हम्म, XYZ का, हाँ सर। और 40 रुपया हो जाएगा तो क्या करेगा जो पहले था वो तो नुकसान ही करेगा ना सर, वो तो। नहीं, नुकसान वो तो जाहिर है। ये सब ट्रेडर लोग का हालत क्या होएगा? खराब है सर, माल ही नहीं बिक रहा, मैं बता तो रहा हूँ आपको। वो ट्रेडर क्या करता है सर मालूम है? टोपी घुमाता है, इधर से उधर, उधर से इधर। अभी बाजार में क्या है, शरद भाई का माल इनकमिंग आ रहा है, शरद भाई ने अभी 120 का बाजार है, इनकमिंग माल 100 में किया तो वो 100 में लेके 110 का एवरेज करके मार्केट में बेचेगा। 80 का माल आ रहा है तो 80 में लेगा, 120 80 100 रुपए का एवरेज 101 में मार्केट में बेचने का कोशिश करे, उसके जैसा ही है सब लोग। अभी हालत बहुत खराब है सर केमिकल्स में अभी। और ये अगर क्रूड ऊपर जाता है ना तो केमिकल को फायदा होता है, क्रूड नीचे आएगा तो केमिकल का भाव भी नीचे आएगा। नहीं, अभी 10% डाउन है क्रूड। हाँ, उसके लिए अभी मैं ये स्पेसिस पे था ना, मेरे को मार्केट में से इंडेंटर का फोन आ रहा था,
मैंने फोन कट कर दिया, मेरे को मालूम है उसका फोन ये नीचे आया तो कुछ ऑफर डालेगा कि भाई ये शिपमेंट मिल रहा है, ये मिल रहा है। मैं बोला कल सुबह फोन करना भाई। मतलब अभी क्या है सर, रात को 10-11 बजे भी वो लोग फोन करते हैं, इंडेंटर ये वो, ये ऑफर है, इसमें माल बुकिंग मिल रहा है। चाइना से अभी थोड़ा बहुत ईज आउट हुआ है तो वो भी तकलीफ है नहीं, अभी सर। वो अपना एक दोस्त है, फैक्ट फाइंडर, बोलता है चाइना से बहुत माल आएगा अभी। हाँ आएगा सर, मैं वही तो बोला आपको। उसका जो मेन कंट्री था वुहान, बराबर है, उसमें लॉकडाउन था। अभी लॉकडाउन ईज आउट हो गया, और दूसरा उसका जो पोर्ट है वो भी, वुहान का पोर्ट भी खुल गया। वो सब लॉक था उसके लिए, इधर सब टाइट था, इधर सब केमिकल का डिमांड अच्छा था। अभी सब क्या है, धीरे धीरे खुल रहा है। तो केमिकल स्टॉक्स, सिलेक्टेड केमिकल स्टॉक्स में करना चाहिए। अभी देखो एसआरएफ कैसा ठोक दिया आज, जबरदस्त। अभी आज एसआरएफ कम से कम इधर से 200 रुपए नीचे जाएगा, मेरे को ऐसा लग बस रहा है। बस कम से कम, मतलब अभी अभी टेम्पररी, तुरंत ही। क्या तुम बड़ा ट्रेडर नहीं बन सकते? वो छोड़ो, शेयर बाजार का आप मत। अरे सर मैं आपसे सीखने को आया हूँ, आप हाँ, तो सिखाओ मेरे, बड़ा सोचो। आपके आपके जैसा ट्रेडर बनाओ मेरे को। अब बड़ा सोचो, जैसे मैं वो सोचता हूँ केमिकल का भाव 40 हो जाए। अरे सर, ओके हार्दिक भाई, मैं ये आपको सर, लेता हूँ। ये ओके सर, अभी आनंद भाई का हाथ ऊपर है। ओके सर, ओके। आओ आओ आनंद भाई। गुड इवनिंग शरद भाई, कैसे हो? मजे में भाई। मजे मजे। मार्केट घूम गया, और आज के घूमने से और आज के डेट के घूमने से एक नया डेट देता हूँ, ये मार्केट 24 दिसंबर से पहले ऊपर नहीं आएगा। अगले 6 महीने की मंदी पकड़ के चलो। छोटा 24 दिसंबर 2025। 202, पहले तो 2022 देखते हैं, इतना लंबा नहीं चलते। ओके 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 6 महीना और लगेगा। ये मार्केट होल्ड की कहाँ तक होल्ड करेगा डाउटफुल है। अर्लियर मेरा 14200 का टारगेट था, अब सीधा सीधा ओपन हो गया आज के एक्शन से, और आज का जो फॉल आया वहां से 7500 लगाएगा। 7500 से पहले ये मार्केट नया हाई नहीं लगा पाएगा, बिकॉज टाइमिंग साइकिल्स जो हो रहा है परफेक्ट बैठा है। लाइक लास्ट वीक जब ये अपन बात किए थे तब बोला था ये एट द मोस्ट ये वीकेंड तक चलेगा, वो वही हुआ। लास्ट वीकेंड चला, कल एक दिन और बढ़ा, और आज चालू हो गया। सो द होल मंथ ऑफ जुलाई वी आर लुकिंग फॉर एट अ एक्सट्रीमली वीक मार्केट, नंबर 1। नंबर 2, डॉलर रुपी जैसे मैं बोला था 80 almost आई गया ऑलमोस्ट। Now the target is 86 which I have told quite some time back. The 86 तो आएगा, उससे पहले रिवर्सल दिख नहीं रहा है कुछ भी। माइनर 1-2 दिन का छोटा मोटा होगा, बट I should expect by mid August or end of August 86 आएगा, which will place extreme pressure on the equity market. और ये जो बोल रहे हैं डॉलर बढ़ गया तो मनी विल कम बैक टू इंडिया, दैट इज ऑल अ होल लॉट ऑफ बुलशिट. इट डज नॉट हैपन, इट नेवर हैपेंस. Rupee money will only come into India, and after the money comes will dollar start weakening. वो money is not going to come right now, money is going out. And all the other news जो आज आ रहा है, आज इसने बाय किया, आज वो बाय किया, FIs ने बाय किया। यार एक दिन के बाय करने से, एक दिन के बारिश से कुछ नहीं होने वाला है. Just wait for the next 1 week, 10 days, there could be excessive selling coming in. So today's structure has been very badly weakened, and everything across the board is going to practically collapse now. We should look at least 10, 15, 20% fall from present levels in almost all Nifty 50 stocks, barring a few. Yes. No, Anand bhai, before you joined in, I made a statement कि looking at today's movement, Right. 200 ऊपर 250 नीचे, मेरे को लगता है 400 नीचे ही जाएगा कल। हाँ, देखिए आज जो था ट्रेंड चेंज डे था, और ट्रेंड चेंज डे पे ये बड़ा रेंज बार बनाया, और इस बड़े रेंज बार के बाद में भी वो क्लोजिंग के पास, आई मीन लो के पास क्लोज दिया। ये आज पे रुकने वाला सेलिंग नहीं है। ये जो भी आज बेचा है 250 पॉइंट का सेलिंग जो हुआ है, ये दिस इज नॉट गोइंग टू स्टॉप फॉर एटलीस्ट 1000 पॉइंट्स एट द मिनिमम। तो 1000 पॉइंट तो ये वीक में भी निकाल सकता है।
हाँ, इमीडिएटली 15,000 के नीचे लग रहा है, हाँ लग रहा है, मुझे तो लग रहा है it should happen, it can happen even in the next 3 days. By end of next week, so definitely we will be looking at below 15,000. अभी भी कोई तेजी कर रहा है तो ठीक है, आ जाओ भाई, आप खरीदो, हमारे को बेचने के लिए कोई तो मिलना चाहिए खरीदने वाला। नहीं, ऐसा नहीं है। No, Anand bhai, I disagree with you. You okay? We can request people not to go long. And in spite of that, if they go long, good luck to them. Very good. Okay. I will agree with you. चलो, good luck to you. और क्या बोले? हाँ। और कुछ है सर? और कुछ नहीं, अक्रॉस द बोर्ड जाओ, उंगली रखो, जो मिला वो बेच दो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और आप रहे हो, वो कोई किसी को सवाल पूछना है तो Sure. भाई, किसी को पूछना है वो स्टॉक के बारे में? आनंद भाई, केमिकल सेक्टर में कौन सा स्टॉक अभी ठोकना चाहिए? अरे ऐसा पूछो, आप स्पेसिफिक पूछो तो बता सकता हूं। दीपक नाइट्राइट, एसआरएफ, अतुल, ये सब पब्लिक फेवरेट है, जिस पब्लिक के पास दे आर हेवीली हेल्ड, they are all going to collapse actually, they will not be small numbers. See, ultimately when the larger, this is not a small bear market, this is a big bear market. नहीं, लेकिन ये सब केमिकल स्पेशलिटी केमिकल है सर, वो सब छोटा कंपनी जैसा नहीं। अरे छोड़ना, काय का स्पेशलिटी केमिकल बोलता है? सो स्पेशल 3,000 का दीपक नाइट्राइट 1,700 चल रहा है, कौन सा स्पेशलिटी केमिकल है? मैं तो पहले से ही ना बोल रहा था सर, चड्डी तो खोल दिया अभी 5 और बचा के। मैं तो दीपक पहले से बोलता था कि हार्दिक भाई, आप सवाल एक पूछो, ज्यादा मत बोलो उससे। इसका दीपक नाइट्राइट का पेशेंट इंडस्ट्रीज भी खुल जाएगा, छोड़ दो यार, क्या कर रहे हो? सब कुछ गिरेगा, देयर इज नथिंग व्हिच विल कम विद दिस ऑनस्लॉट। आज जो क्रूड गिरा 10%, डोंट टेक इट एज समथिंग व्हिच इज बुलिश इंडिकेशन, दिस इज अ ग्रेट बेयर मार्केट। यहाँ पे क्रूड गिर रहा है, स्टॉक इक्विटी गिर रहा है, एक्सेप्ट डॉलर सब कुछ गिर रहा है, इवन फॉर दैट मैटर फॉरेक्स इज नॉट होल्डिंग, gold is not holding, silver is not holding. These are classic symptoms of a great bear market. Don't try anything because ये सबको लेकर जाएगा नीचे। अच्छा आनंद भाई। हाँ जी। Sanjeev Sehgal has asked me your view on ONGC, please. And Radhe has asked your views on NMDC. NMDC, ONGC. Let me pull up the chart. ONGC तो बहुत नीचे है, 60 रुपए तक परसों भी बोला था ना एक बार। It is going down. Don't ask the same question again. It is broken. पहले तो 100 लगाएगा 100, बहुत इजीली लगाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको कब लगा दिया। And see, if you even take a monthly chart, ONGC in practically almost all stocks should test the 2020 lows. So you are looking at much lower prices. This is not going to hold. जब निफ्टी का टारगेट दे रहा हो 7,500, तो कौन रुकेगा इधर? कोई नहीं रुकेगा। Across the board सब गिरेगा, one after another. It will be a sectoral selling. फिर वो कोई पूछा, सनन जी प्लीज, हेलो सर, व्यू ऑन हिंदुस्तान को। देखो ये आनंद भाई को पूछने के बजाय मैं ही बोल देता हूँ। बजाज फाइनेंस पे क्या व्यू है आनंद भाई? बजाज फाइनेंस weak. Everything is across the board is weak. Don't even ask any particular stock. Bullish view हो तो, bearish view हो तो पूछिए. Even something like ITC, which has gone, the weekly chart today is really decimated the picture. ITC by not going about 290 is in a very bad situation. It can head down to 200. तो वहां पे भी पब्लिक अभी भी बुलिश है, वो भी गिरेगा।
अरे आनंद भाई तू थोड़ा पब्लिक सर्विस में लग जाओ ना, हिंदुस्तान कॉपर, हिंद कॉपर। वो तो बकवास ही है ना यार, वो कॉपर इतना डाउन है तो क्या बोलने का जरूरत है, जरूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली। पूछने वाला भी यार क्या है पूछते। आनंद सर, 2 स्टॉक मेरे हैं, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और वेट हेवल्स। वेट व्यूज ऑन फार्मा सेक्टर। Pharma can just be a minor defensive, but it cannot really do much. Onslaught will be going to be terrible. People are not understanding. I've been telling from October last year. You don't know what is going to hit you. This is not a small bear market. This is much bigger, much larger. It is not going to end so soon, not end so quickly. Even December 24, the date I am giving is only for the first leg of this bear market. There will be a second leg up and a third leg down. बहुत लंबा है, इतना जल्दी एक्सपेक्ट मत करना कुछ भी। एंड 18 महीना आप लोग ने तेजी किया है, 18 महीना में माल भरा है, पहले माल खाली करो फिर बढ़ेगा मार्केट, इतना जल्दी थोड़ी नहीं बढ़ेगा। अरे आनंद भाई बहुत सवाल है ये फिर एचपीसीएल एंड बीपीसीएल भाई जब रिसेशन आ रहा है, देयर इज सच अ ह्यूज प्रॉब्लम इन द अक्रॉस द ग्लोब, एचपीसीएल के अकेला क्या झंडा तो लहराएगा रहेगा? ठीक है, सिंपल आंसर है फॉर एवरीथिंग। Exit, sit on cash. Exit, sit on cash. Exit, sit on cash. Nikhil Kakkar has asked views on Bajaj Finserv and IRCTC. मैं आंसर दे देता हूँ। Bajaj Finserv will be 4,000 and IRCTC will be sub 100. वो धंधे का मतलब ही नहीं है कुछ। ये फिर वी नींबू भाई आईटीसी वो तो बता दिया। फिर कितना है रिम लुमेक्स का नहीं हो गया भाई, ये हो गया। चलो सर मैं पूछ लूं 2 स्टॉक। आनंद सर, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एंड हेवल्स। I'll take Havels first. Havels India, 1 week. See, as I don't think it will hold 1,000, but as long as it holds 1,000, it has the potential to go up. Okay. Your Havels. But then let's look at the larger picture. If you look at the larger picture on a weekly and a monthly chart and the cycles that are going on, Havels also has a problem. It cannot go up again. Though I say 1,000, it cannot go up till it tests 400. 400 is the extreme lower level it has to test. Without that, difficult, because if you see the larger tails at the top and the price that it has come down from, this is not the time for it to show any great movement. Yes, एक बार 1,000 रुपए पे आपको फंसाएगा by giving a bounce till 1,200 again, but ultimately heading down. And ICICI, Lombard, see Havels, if you have hold with a stop at 1,000, and ICICI, Lombard कहाँ है? ICICI Lombard क्यों नहीं आता है? ICICI Lombard का ये क्या है? ICICI GI. ओके हम ये सब देखते नहीं है। ये है ना 1100 के नीचे बेचने का है, अभी नहीं बेच। ओके आप 1100 के नीचे बेचो मत बेचो, छोड़ दो, एंडिंग डायगोनल है, ये 600 हो जाएगा। जाओ 100% 600 नहीं शरद सर, मैंने दोनों शॉर्ट किया है। हाँ तो रहने देना, पूछता क्यों है फिर? अरे खाली किया है, बैठा रहे ना, काय को पूछने का, काय को बताने का। ठीक है, सॉरी ठीक है। और मैं बोलता हूँ ये जो आईसीआईसीआई प्रू है ना, वो भी बहुत घट जाएगा। ओके, this week please don't keep even the smallest bullish view. The onslaught that is going to be that is coming is terrible.
The cycles are talking about very weak markets for this entire week. ऐसे आपको लगता है सिर्फ 3 दिन है इस वीक में, बट वो 3 दिन में बहुत हालत खराब हो सकता है. नहीं अनंत सर आप सही कह रहे हो. 5 कल और परसों भी कुछ तो है, बिकॉज व्हाट दे से इज दैट मर्क्यूरी इज एट अराउंड अबाउट 1.58 डिग्रीज एंड 1 between 1.9 डिग्रीज. तो सर काफी छोड़िए ना सब ठीक है छोड़िए. सर, छोड़िए. चलिए ठीक है सर, ठीक है. Shubham, you have anything to say, please? Yes, sir. Three stocks actually: TCS and Titan and HFCL. HFCL will not be able to answer because it is in B group. TCS will go down around 2700. Titan will be around 1600. Perfect. Okay, this is for next 6 months. Like, Arey, next month, yeah. okay, right, sir. Optimism देखो. Okay, thank you. Thank you. DGRS, Yes, sir. Good evening, Sharat, sir. good evening. Good evening, Abhishek and Samad Bhai and everybody else on the space. Hmm. So my view on the markets is still unchanged. It's very bearish. And if you see the fundamental reasons, you'll understand why one should be bearish. You see Accenture, one of the world's biggest companies, Fortune 50 company, which is in the exact same business as your Infosys, Wipro, TCS, HCL, etc. That is No, IT no, no, consulting. no. Yes, I sir. disagree with you. Yes, sir. It is much more than TCS and Infosys. Yes, sir. It has a Much bigger. consulting arm. Correct, It has correct. a consulting arm which brings in the most of the revenue. Okay, Correct. good. Yes, sir. And as of now that we speak, it is at 271.90 Yes, and sir. 52-week low is 268. Yes, sir, absolutely. And the last 5 trading sessions only, the stock is down around $21, which is about 7.5%. Hmm. And I think similar thing is going to happen with the TCS. See, yesterday TCS was already down 2.5%. Today another 0.8%. And I think by the time result comes, it'll easily be down another 3 or 4%. No, Uh, I will stop you over here yes, sir. about TCS. Yes. In the last result, Mm-hmm. it was horrible result. Correct. And then for buyback or whatever, I don't know, it went up and Right. now it's going to be my sources say results will be bad. Yes. I'm to saying, sir, 3-4% by the result day only, which is Friday, and then after the result, God knows where it will reach. Hmm. So IT, I'm basically very bearish on, and I think the mid-cap IT companies will fall at a much faster pace. So companies like I think Mindtree, Coforge, Persistent, and LTTS, which is Larsen and Toubro Technology Services, Hmm. I feel any of the four are very very good shorting opportunities for the coming week and coming month. We can earn good money in these because these mid-cap companies have such a high valuation that when the result comes bad of a large company, they will fall much faster. So plus you see dollar rupee it's going to touch 80 now, which is a big negative for the Indian economy. And I would just request everyone on the space to please not get fooled by these media people who will tell you कि अगर रुपी घटेगा तो IT and pharma वालों को फायदा आएगा, because the circumstances are very different now. See, 2020 and 2021 was like a dream scenario for these sectors, which is pharma and IT. And because of COVID, a lot of companies had to make websites, apps, adopt digital methods and strategies, etc., to reach the customers. So the order books of all these companies went up a lot, and subsequently their share price also went up and valuation went very high. And people started extrapolating those order books of 21 and thought that all throughout their life there'll be these high valuations. So the digital services demand is reducing in the US, which is their main market. Plus the attrition rate is also very high, and the high valuations will definitely not stick for these mid-cap IT companies. In fact, sir, Persistent and LTTS used to trade at above 40 P. Now Persistent is already at 36, LTTS is at 32, and I think going forward they can easily come back to 20, 22, which is anyway their traditional P that they used to trade at. So they can easily become like 30, 40% down even from here.
तो IT तो मुझे नहीं लग रहा कि it can support the market going forward. And apart from IT, my the usual shorts are still there. The chemical stocks that we've already discussed, like Aarti, Deepak, SRF, etc. The China plus one narrative is over now because China is opening up and they will also start flooding the Indian market very China soon. plus one. China plus one. Yes, sir. China plus one is over now. That narrative. वो पहला तो मेरे को समझता ही नहीं था चाइना प्लस वन चाइना। हाँ फिर सर, वो 6 महीने के बाद समझा मेरे को। मैं बोला क्या उल्लू बनाता है। हाँ कि जैसे कि चाइना का सारा मतलब माल बिकना ही बंद हो गया और इंडिया ही बनाएगा, तो दैट वाज द नैरेटिव दीस फंड मैनेजर्स ट्राइड, बट अभी वो नहीं टिकने वाला. So I think if you're in chemical stocks and IT stocks, especially your mid-cap ITs, I would suggest please get out and put your hard-earned money somewhere else. And finally, sir, last point is that best to go with the trend. The trend is downward right now, so just keep that bearish view only alive, I would say, to Thank everyone you on the very space. much. Thank Yes. you. Thank you, sir. Thank you. विशाल भाई, हाँ बोलिए। सर गुड इवनिंग। पीडी आपको अभी लेता हूँ, इनके बाद में लेता हूँ, विशाल भाई के बाद। नहीं सर, पीटी सर को बोलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोलिए पीडी भाई। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अभी जो ये बोल रहे थे ना अपने केमिकल के जो ट्रेडर, मैं नाम भूल गया उनका, ये अपने हार्दिक भाई। हार्दिक भाई, हाँ हार्दिक भाई। सर आपको पहले भी बोला कि मैं एक फार्मा कम एफएमसीजी का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। 3 महीने से ट्राई कर रहा था सर मैं नाइका में वेंडर बनने का। अभी जो आईपीओ आया था कुछ टाइम पहले नाइका का, मैंने फॉर्म्स भरा, उसका वेंडर रजिस्ट्रेशन किया, बहुत चक्कर काटे ऑफिस के, सब हो गया। 15 दिन पहले उनका मेरा वेंडर कोड आ गया, हमारा टर्म्स डिसाइड हुआ सर कि 1 महीने में वो मेरे को पेमेंट देंगे, मैं जो माल सप्लाई करूंगा उसका। आज जब भी उसका पहला ऑर्डर आया तभी परचेज मैनेजर बोलता है सर टर्म्स चेंज हो गया है, अभी नाइका एज अ कंपनी हमारा टर्म्स है 180 डेज ऑफिशियल। मतलब सर इनका आईपीओ का पैसा किधर गया? अभी ऑफिशियली मेरे को 6 महीना बोल के माल मांगता है उन लोग को, तो आई हैव वेरी पोलाइटली डिक्लाइन टू गिव देम। 6 महीना मैं उधार ही नहीं दे सकता है। ये ऑन द ग्राउंड सिचुएशन आज की बात है सर, आज की टुडे। ये अभी आईपीओ किया इतना बड़ा बड़ा, ये सब पैसा गया किधर से? मतलब दिस इज द सिचुएशन ऑफ मनी टुडे, देयर इज नो मनी टू गो अराउंड। और कुछ बताओ ना पीडी भाई, आपके पास तो इतना सामान आता है, इतना सप्लायर आता है, सब आता है, बोलो ना सर कुछ। उस दिन मेरा श्रीनी से बात हो रहा था एंड इवन श्रीनी वाज सरप्राइज्ड। सर अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ, एक छोटा सा 52 लाख रुपए का ऑर्डर के लिए सिप्ला का नेशनल सेल्स मैनेजर मेरी ऑफिस में आया था, जिसका रीजनल सेल्स मैनेजर डिस्ट्रीब्यूटर को मिलने से इतराता है, उसका नेशनल सेल्स मैनेजर मेरी ऑफिस में आया था। आज ये लोग को माल बेचने में इतना हालत खराब हो गया है। ये तो ठीक है, अपन बिजनेस वाले किधर ना किधर से पैसे का जुगाड़ हो जाता है और अच्छा खासा डिस्काउंट ले लेते हैं उनके पास से, लेकिन दिस इज द सिचुएशन। वॉल्यूम्स ऑफ डाबर मैरिको, बोथ ऑफ माय वॉल्यूम्स आर एज आई सेड, मई महीने से जून, अप्रैल महीने से मई महीना वाज डाउन 10 to 15% एंड मई से जून वाज डाउन अनदर 15-20%. So from what I sold in April and what I sold in June in FMCG, as Srini was saying, सर मैं साबुन भी बेचता हूँ, मैं तेल भी बेचता हूँ बाल का, और मैं बीपी चेक करने वाला मशीन भी बेचता हूँ। एक्सेप्ट फॉर ग्लूकोज का चेक करने का मशीन और बीपी का मशीन छोड़ के बाकी सब 30% डाउन है से। ये ऑन द ग्राउंड, दिस इज आई एम टेलिंग यू, ये मैं आई डोंट लुक एट चार्ट्स, मैं आपको फॉलो करता हूँ, ये अलग बात है। आई ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर आइडियाज एंड व्हाट वी डिस्कस हियर, बट ये राइट नाउ अभी दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड सर, ऑन द ग्राउंड। हाँ, अगर सेल किसी का टिका हुआ है ना सर, तो ये जो एमएनसीज आप बोल रहे थे, रोश है जिसका एक्यू चेक ब्रांड है, जॉनसन एंड जॉनसन है जिसका लाइफ स्कैन का ये वन टच का ब्रांड है, उसका सेल में 5 पैसे का भी फर्क नहीं आया है, बिकॉज वो लोग ने ब्रांड वैल्यू टिका के रखा है। बाकी आज
अपना बहुत जब भी अच्छा टाइम रहता है ना, बहुत मसल्स दिखाए थे सर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर को, ये डाबर मैरिको वाले सब। आज साले मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं, इतना खराब हालत हो गया है सबका। एंड दया आता है सर, इनके सेल्समैन की नौकरियां चली जाती है अगर फिगर नहीं बनता है तो, वो ऊपर वाले की नौकरी नहीं जाती। कभी कभी Srini, दया खा के भी इनको ये करना पड़ता है, ऑर्डर देना पड़ता है। Srini, PD proves your point that Marico का हालत बहुत खराब है. Yes, sir. Can I take one more minute, sir? Yeah, Somebody yeah, was. yeah, yeah. So, I don't know if Superstock Idea is on the call. He's last time कुछ auto पे debate हुआ. He's a Maruti fan. Balance sheet wise, a good funder is on reading balance sheet. तो DM में थोड़ा मेरे फंडे सीधे कर दिए उसने. We were just debating on Twitter, and I just want to. It's difficult to do it in public, brutal analysis. But simply put, auto demand is considered non-perishable. मेरे को 2 लाख का नौकरी लग गया, मैं यंग हूँ एंड मेरे को गाड़ी खरीदना है, आई वॉन्ट टू बाय इट दिस मंथ, नहीं खरीद पाया तो आई विल बाय इट 2 months लेटर, 4 months लेटर, 6 months लेटर. इट इज one of those rare categories जहाँ वो demand doesn't go away unless I become 20 years older, then maybe I won't, but so in the short term, unlike hotel rooms or soft drinks or newspaper or airline ticket. So there's a very important difference. Now, what is so people are reading that passenger vehicle data cars is up versus pre-COVID base. But what they're not seeing is if you average out the last 3 time periods for quarterly data, which is April, May, June 2022, 2021, 2020, it is 5 lakhs. And the COVID before that, 2019 April May June is 6.8 lakh. This means 1.5 lakh का अपर मिडिल क्लास कंज्यूमर गाड़ी खरीदने का जो औकात था वो नीचे गिर गया है. कंज्यूमर, so imagine it like a consumer pyramid. They have fallen off into, let's call it middle class. The middle class, if they're buying bikes, the bike data has gone from say 40 lakhs quarterly to 35 lakhs, which means some upper middle have fallen into middle, and many more middle have fallen into lower middle. This is a classic ulta of what we have, guys like me have enjoyed the India ride and are hoping to continue at some point, where our income pyramid kept swelling upwards. ये उल्टा हो रहा है. So like they show those buildings imploding in those movies. The top floor is weakening, going down to the middle is weakening, going to lower middle से road पे आ रहा है. And this data is so easily analyzable. And अभी किसी ने बोला कि आप मीडिया की बातें पे मत जाओ. This is a 2 minute thing to explain. It's not rocket science. But ये मीडिया में कोई नहीं बता रहा आपको. So the narrative, once again, I use this dialogue. Narrative is very stretched from reality. And Sharad Bhai is right. I think this may have started in 2016. We weren't watching it closely, but it is going on for the last 3-4 years. बड़ा brutally obvious है. No, Other, as Fact Finder will agree, the CV numbers and motor vehicles numbers are the same, depressing. Yes, Srini. हाँ सर, दूसरा बात है, आई वांट टू रिफ्रेश मेमोरीज कि जब जुलाई 4 8 or whatever that 2019 before COVID mess, the budget, there were a lot of expectations. फिर बजट वो सेम आया क्योंकि गवर्नमेंट वाज री इलेक्टेड, सो द इंटरिम बजट को फाइनल कर दिया. थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था. बिफोर निर्मला सीतारामन अनाउंस द कॉर्पोरेट टैक्स कट, मार्केट घुसने वाला था. आई रिमेंबर बिकॉज आई वाज शॉर्टिंग, आई हैड जस्ट स्क्वेयर्ड ऑफ माय शॉर्ट्स, सेइंग अभी मोटा शॉर्ट करना है, आता नहीं है तो थोड़ा एनालिसिस करना है. सुबह देखा, शी अनाउंस द टैक्स कट. So our economy was already in very bad condition then. 12,000, 12,400 or 12,000 it was then. We would have fallen to 10,000 even then, I feel. And now add on COVID and this dollar problem, oil going up, Russia, Ukraine, US, yes, a global mess. So the bottom is far away at a very fundamental level.
And if we were overvalued in bull phase, we will become undervalued in bear phase. So, No, then also we will be overvalued. Anyway, Srinivasan, विशाल भाई बोलिए. Sir, good evening. Sir, before I start, a few data points. Sir, आप एक चीज देखिए, euro is at a 2-decade low vis-a-vis dollar. There are major recession fears. Natural gas prices वहाँ पे तेज चल रहे हैं. जर्मनी का सर ट्रेड डेफिसिट डेटा they were expected कि सरप्लस आएगा, वो डेफिसिट में आया है. यूएस इज ऑलरेडी हैविंग फियर्स ऑफ रिसेशन. तो पहली चीज तो ये जो लोग सोचते हैं कि खाली इंडिया देख के हम तेजी कर लेंगे, उन लोग के लिए ये एक पॉइंट्स देखने बहुत जरूरी है कि व्हेन ग्लोबली वी आर हेडेड फॉर अ स्लो डाउन रिसेशन और व्हाटएवर यू कॉल इट, how do you expect India to be sealed out of this? India cannot be safe out of this. Second thing, sir, कल इंडिया का ट्रेड डेफिसिट डेटा जो आया है, it's a huge deficit which is मतलब it's more than what was expected. और जिस हिसाब से सर ये चल रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट सर 3% के आसपास एक्सपेक्टेड है कि जीडीपी का हो जाएगा, which is a big number. And if still people who understand macroeconomics, I don't think so anyone will think of going and buying the markets, looking at these data points. तो जो लोग ये 200 पॉइंट 300 पॉइंट तेजी होता है और हल्ला करते हैं बुल आ गया, बेर खत्म हो गए, गॉड ब्लेस देम. सबसे पहली चीज तो सर मेरा ये बोलना है, I continue to remain bearish on the markets. Like I have been interim sir, stock specific थोड़ी बहुत तेजी कर लेते हैं, but that's okay, time pass. But overall sir, like Anand bhai also said, sir, I am also expecting a major fall coming in this week. Next 2-3 days, I am expecting a major one-sided vertical fall is expected in the markets. मेरे हिसाब से मेरे को भी वही पैरामीटर्स लग रहे हैं. सर एक स्टॉक बोलूंगा, ज्यादा स्टॉक्स के ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि काफी लोगों ने स्टॉक्स बताए हैं. तो वोल्टास सर मेरे एक रेडार पे है. सर अभी 950 का रेट है. सर 700, 650, 500 कुछ भी हो सकता है. टू स्टार्ट विद आई एम एक्सपेक्टिंग इमीडिएटली 15 to 20% कट इन दिस स्टॉक. नहीं तो ये सपोज कि आपने वोल्टास निकाला, बराबर है, आपने आइडेंटिफाई किया. एक दो लोग बेच के छोड़ दो उसको, उसका भाव मत देखो. बराबर है. वो भाव देखते तो कट हो जाता है, और सौदा बड़ा होगा तो तकलीफ आप देगा. तो आप एक दो लॉट ही बेचिएगा मेहरबानी करके, और आप पूरा पैसा उठाओ. राइट सर. 10 लॉट होएगा तो 50 रुपये में वो सो जाएगा. तो सर पूरा और नहीं दिखाने का. और एक बात बोलता हूँ, ये जितने भी चार्टिस्ट है ना, ये मैं आनंद भाई का नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे ही जनरली बोलता हूँ. किसी को मालूम नहीं है निफ्टी 50 में वो कौन सा स्टॉक है. उनको पता ही नहीं है निफ्टी 50 में वो कौन सा. हाँ मालूम होगा एचडीएफसी, रिलायंस, ये वो लीवर. और सब लोग डाउ जोन्स की बात करते ना. कसम से कोई आदमी बता देवे ना डाउ जोन्स में कितने शेयर है और वो कौन से शेयर में हार जाऊं, किसको कुछ पता नहीं है. और ये बात है ना एकदम सिंपल है. आप investing.com पे जाइए, कंपोनेंट्स में जाइए और देख लीजिए तो आपको पता. लेकिन उतना भी तकलीफ नहीं लेने का है किसी को. ओके एनीवे चलिए. सर डॉक्टर सर बोलिए. एक स्टॉक और है, एक्सिस बैंक, जो पिछले 2-3 दिन से काफी लो वॉल्यूम के ऊपर जा रहा था, लो वॉल्यूम्स के ऊपर गया था. एंड इट इज अ लॉन्ग ऑन एक्सिस बैंक, इज अ वेरी वेरी क्राउडेड ट्रेड. सर इफ दिस टाइम अराउंड इन दिस फॉल, इफ इट मैनेजेस टू ब्रेक 620, देन गॉड सेव द बुल्स ओवर देयर. दैट्स इट सर. आप पूछो ना आनंद भाई को क्या लगता है एक्सिस बैंक. आनंद भाई, इफ यू आर देयर. नहीं है आनंद भाई. आनंद जी नहीं है. Now, do we have any fact finder? You will speak.
सर मेरे को 2 मिनट चाहिए सर, इफ यू कैन अलाउ। हाँ बोलो बोलो। सर अभी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के जो हाल है ना, जो रिजल्ट आने वाला है इस बार हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की, इट विल बी द खराब से खराब रिजल्ट आने वाला है इस बार, क्योंकि इन्वेंट्रीज इतनी ज्यादा है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट ज्यादा हो गया है, सीमेंट स्टील सभी जगह पर, और आधे बने हुए मकान, आप दिल्ली मुंबई जितने मेट्रोज है, लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, रीआइट्रेट कर रहा हूँ, एचडीएफसी लिमिटेड विल बी द वर्स्ट हिट अभी इसमें, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट शेयर वो उसका है। सेकंड वन इज एसबीआई, और तीसरा जो ये छोटे वाले हैं, जो हम बोलते हैं बैंकिंग सेक्टर में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, यानी 40 लाख से कम वाले जो छोटे से शहर में होते हैं, तो उसका जो हाल बेहाल होने वाला है, तो खुदा जाने क्या होगा, क्योंकि ऑनेस्टली जैसे ग्रुप फाइनेंस लिया है बंधन बैंक ने, तो बंधन बैंक का हाल यानी आई डोंट थिंक सो इट विल बी गो द आरबीएल वे, 2 फिगर में आएगा भाव बंधन बैंक का। तो इस हिसाब से सर जितना हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है वहां पर इन्वेंट्रीज यानी एनपीएस बढ़ने वाला इन शॉर्ट, और मार्जिन्स कट होने वाले हैं। सेकंड में जो हमने बोला था सर, एनबीएफसी में जो बजाज ट्विंस है उनका मार्जिन जो है वो सबसे अभी कम होगा, क्योंकि उनका जो लेंडिंग है वो पर्सनल लोन, पर्सनल बिजनेस लोन में है, so that means the net interest margin will be on the lower side because cost of funding is getting on the higher side, और उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो फंडिंग किया है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो आई विल से दैट बजाज ऑन द लॉन्गर टर्म यानी 6 महीने के टाइम फ्रेम में 3 डिजिट में आएगा ये दोनों सर। दैट्स इट सर। और रिक्वेस्ट है क्या? नहीं सर, रिक्वेस्ट तो नहीं है सर कोई, फैक्ट फाइंडर आ गया सर। हाँ बोलिए फैक्ट फाइंडर। Sorry, I was kind of a little tired. No, I wanted to ask. Actually, Sharad ji, I missed a large part of the discussion, so I'm not too sure really what's been spoken about. But as far as housing finance is concerned, I would want to differentiate between the two. I would not as worried about general housing, which is done by the larger, housing finance companies where the average ticket size is large. Those people have not got affected. People who have taken home loans of 30, 40, 50 lakhs and above. The average, home loan in our country is about 30 lakhs. So, in terms of what is on the balance sheet of all these finance companies and the banks, but then you also have the smaller guys, like Aadhar Housing or AU Bank Housing Finance, or I'm not going to mention specific names, but in general, those guys cater to people who are at a much lower income segment. Those guys, I think, could potentially have a problem, not just in terms of growth, but in terms of asset quality. As far as net interest margin pressures are concerned, I'm not too sure about that. But yeah, I think the entire finance sector eventually, with little lag, will face net interest margin pressure, but not immediately because their loans are repriced upwards for the stock of the book, but the financing cost hasn't picked up as well as yet, and that will pick up with a lag. But when that picks up, then there's no stopping that cost from going up. And I had written a tweet about the RBI using one of the tweets written by the Kotak fixed income guy. I think this current account deficit number is quite concerning. It is the highest current account deficit in the month of June for in India's history. And my sense is, and just consider these things. The imports of the last 3 months included, steel. Remember that the government had, come out with some restrictions on steel. That was out of about a month ago, maybe a month and a half ago. But contracts that were already signed would have been signed more than 2 months ago. So
So exports would continue to happen until those contracts become, new contracts would be signed, and so the exports will start getting hit with a delay. Similarly, agri commodity prices have crashed. So that impact from exports you will see with a lag. Uh, iron ore, I think we exported a bit, not too much, but that also will get obviously hit very badly. Plus, we are actually today enjoying on the import side cheap Russian crude oil, which I think is saving us about $1 billion a month. That I do not know when it will happen, but broadly we have a problem in terms of the current account deficit because foreigners are selling India at the rate of almost $8 billion a month. You add $8 billion to your $30 billion of current account, you have a problem, big problem. And the RBI's only choice now, I think, is to allow the rupee to depreciate a little more. And I think the government will introduce more restrictions on imports. Electronics, they will hike up import duties and stuff like that. So if you're thinking of buying anything personally, you should buy it now. Plus, the RBI will probably hike up CRR because that's the only way they can actually, strengthen the rupee. Yeah, I mean, these are some of the thoughts. If you have any questions on, I was looking at DMAR's results. Wow, that is an indication of where lower income middle class is getting hit very badly. I mean, because they are like for like growth on their outlets is down 13%. I think it missed by 13% or down 13%. That is very bad. I am surprised the stock is trading at 150 times earnings. In a normal scenario, if that stock should be half, more less than half, probably 1/3 in terms of valuations, because clearly there is a big problem for the company. A lot of people don't realize this in DMart. DMart entire business model is based on raising capital, because what they do, they raise capital at very high price to earnings multiple and price to book, and they invest that capital into land. Effectively, the new investor who's coming into the company is financing the land for the company. That land is owned and you build a mall or a outlet, large retail outlet. You don't charge rentals because you own the land. So your margins are high for DMart because of no rentals. Now, the moment this company is not able to raise capital at high multiples, it can't finance land. If it can't finance land, it will start paying rent. If it starts paying rent, its ROEs will collapse, its margins will collapse. So the entire business model is nothing but high PE capital raising model. A lot of people don't understand that. By the way, on Reliance, I personally feel that this event that has happened of taxation. This is the first time in the last 20 years, if not longer, where Reliance has significantly got hurt by taxation. Typically, SEZ profits are never taxed. The fact that the government went out of its way to tax those profits says that there is more that meets the eye with regard to the relationship between Reliance Group and the government of India. Remember, the government of India has lost the case against Reliance. So they had to get money back. In my view, somebody can argue that this is a derating event. I mean, if the government is obviously helping only one group and it is trying to hurt another group, that's not a good sign.
Yeah, Tech Finder, one question. आज के दिन में 4,58,000 हाफ मेड होम्स है, यानी कंप्लीटेड नहीं है घर, ओके, दैट हैज नॉट बीन गिवन पोजेशन टू द एंड यूजर. तो वो जो लोन लिया होगा किसी ने 4,58,000 में, वी सपोज दैट देयर विल बी 40% विल बी फंडेड बाय बैंक्स. तो उसमें what will be the this 4,58,000 homes which are right now not given possessions as per the CREDI details. So उसमें 71% are from the metros, the half made. So what will be the health of the banks which would have funded this होम्स, बिकॉज वो तो एंड यूजर तो, क्योंकि उसके पास तो आने वाला नहीं है घर बन के, क्योंकि बिल्डर ने बोल दिया है कि हम मेरे से नहीं होगा, और होम लोन वाले बोलेंगे मेरे को इंस्टॉलमेंट दो. I'm trying to understand your data. Are you talking about the number of houses under construction across the country? नहीं, पेंडिंग एंड will not be constructed due to various issues like raw material prices. Due to Where is this report come out? that is credit. I will send you the details in DM if you can. आज DM में भेज देना. Yeah, please DM. But अगर ऐसा होता है तो what will be the end, क्या होगा result? No, see, I think Samar, I think that let me read that article, because I have a feeling you are referring to the stock of houses which are under construction and yet to be delivered, right? Now you need to look at that stock and break it up into various cities. So don't remember, real estate is a very region specific issue. नहीं, मैं क्या बोलता हूँ भाई साहब, ये पर्सनल DM में कर लेना. ये रिलायंस के बारे में फैक्ट फाइंडर, योर ओपिनियन ऑन द valuation of retail, Geo, and something called. No, I will not comment. I will just simply make you think about it. If you look at all the reports by all the analysts, they all value Reliance Retail at $100 billion and Reliance Geo at $100 billion. Now, two issues come to the fore. If I look at Walmart, which has $630 billion of revenue, and it makes a 21% ROE. It is very well diversified across the world. It owns Flipkart, for instance, and that is getting valued at only $330 billion with such a good ROE. Now, Reliance Retail to be valued $100 billion for such a small fraction of the revenue. I don't even know what their revenue is. If their revenue is probably less than $5 billion, $10 million max. Not even that. That's like, if you compare it to Walmart, it is like 150th or 160th. I don't know what it is, but it's small. Who's going to give it that? Now, for them to realize such a value, they need to have two options. One is they hive off the companies separately and get them listed. Now, here is the problem. The moment you hive off the companies, everybody will dump the parent company because everybody wants to play retail and telecom, right? So then, and then its weight in the index becomes much lesser because it's split up, right? So that's one thing one needs to remember. A lot of companies will say, investors who are ESG investors might not, they might look at it differently. So that's something to keep in mind. If the other option is that they list it. Now, here is the problem with listing. Eventually, you have to list 25% of the company. Let's say they were listed at $100 billion. They will do an IPO of $10 billion. $10 billion becomes one of the world's largest IPOs.
It's not easy to execute such a scenario. And then you know that after the $10 billion IPO is over, in the next 3 years, they will supply $15 billion of paper because they have to do listing of 25% in 3 years. That's a problem. There'll be so much of overhang, which is the same problem LIC is facing right now. They've only done 3%, but if they have to, eventually list 25% in 3 years, then there's a big problem, right? Because they'll only supply and supply and supply of equity paper. So same problem will be for Geo Telecom. I mean, valuing that telecom business $100 billion, can it be justified? I don't know. Stuff. Somewhere in June, આપણે LIC said that they will come out with the results by 30th of June. तो अभी तक आया नहीं है. Fact finder. That's interesting. I haven't looked at it, but logically, they need to have done that because IRDA has, and LIC does come under IR. I think they have to come under IRDA. They do follow IRDA norms, and they have to disclose their mortality charges and all these other filings that they have to do is by June end. So I'm a little surprised that they haven't disclosed results. Maybe somebody's got. One more point, sir. Fact finder, you were asking Reliance Retail's revenue, right? It's not 10 billion. It was $26 billion for FY22. Thanks, but thanks a lot. Thanks a lot. But Yeah, still a fraction, right, of $630 billion. yeah, obviously. Yeah, and does it make a ROE of 20%? That I don't know. This is just No. because it's It a makes subsidiary. around 5,000-6,000 crores. 5,600 crores of profit. 6,000 crores of profit. You're saying? Yeah. वो छोड़ो ना उसका नंबर का कोई वैल्यू नहीं. And you were talking about the Micron thing. That also will be a major drag. Sorry, what were you saying? You were saying about the Micron thing. What Micron? No, the Micron US. They give a warning, no inventory is so much and this and that. You're talking about chips. Yeah, no, Reliance retail will be affected, no. Mobile and all that. Oh, yes, sir. No, so actually, this is interesting. Right now, there seems to be a huge pickup of inventory of chips across the world. I think that's something that everybody started seeing, right? Bloomberg's shown out a report of how inventory of microchips have, rapidly increased. So actually, in the next 2-3 months, if companies continue to complain about shortage of inventory of chips, then you need to really question whether they're telling the truth or not. One of the issues that Reliance Jio Telecom faced was that they said that they could not get enough of chips, which is why they never launched their Jio phone 2, the Jio Google phone. They never launched it at a good price. Now, once the chip problem gets addressed and the availability of chip gets addressed, there is no reason for them not to introduce that phone at a very cheap rate. My own estimation was they can potentially launch it at 2,000 to 3,000 rupees. They've launched it at 6.5. And the reason is that they can subsidize the cost of the handset by allowing various companies to install apps on the phone pre-installed. Anybody is no, even ICICI Bank might be willing to say, okay, I'll give you 100 rupees for every mobile set in which you pre-install ICICI Bank app.
right? It's nothing in terms of advertising, just 100 rupees. And like that, you choose some 10 or 15 different companies and they subsidize your phone cost. So if despite all of that, if they're not able to launch, then there's a big problem for the company. If they launch it, there's a problem for the entire sector, because then Reliance will get aggressive. Because the problem with the entire Indian telecom industry, which nobody wants to talk about, is that the active subscriber base has not grown for 3 years. It has stagnated at 1.1 billion people. Just stagnated there. If you break up the 1.1 billion SIMs that you have, active SIMs that you have, it's basically 800 million handsets, 850 million handsets. Out of the 850 million handsets, there are 550 million smartphones and about 300 million feature phones. The challenge for the Indian as telecom companies is to convert those 300 million feature phone company users into smartphone users. When they convert that feature phone user to a smartphone user, your ARPU goes up from about 80-90 rupees to about 200 rupees or 180, 170, 180 rupees. The problem is that the handset, which is a feature phone, is typically 1,000 rupees. You want that person to buy a 4,000 or 5,000 rupee handset, which for that person becomes very expensive. So he has to spend money on that handset, plus he has to more than double his ARPU per month. That is very challenging for those poor people, 300 million poor people, which is a problem for Reliance and which is a problem for the entire telecom industry. So there is a possibility there could be a cat fight between the two. But one should watch in the next 3-4 months. If Reliance doesn't launch their phone, there's a problem with Reliance. If they launch their phone, there's a problem for the industry. Tech Finder, I will. There are 4 speakers. I'll finish with them and come back to you again. Khyati. Hi, thank you for the opportunity, sir. I have a question for this esteemed panel, and please help me because I'm really looking for an answer here. Uh, the question is that, with all the things that are going wrong, with a lot of things that we discuss, domestically and internationally, I think, any market or any index is only a function of liquidity. Money chases price, and that's how price changes. So if there is only so much money we can park in a 10-year US dollar bond, or in a fixed security kind of instrument, and we have to choose amongst the worst. Everybody's saying US, UK, eurozone looks very bad. It looks like it's going on the brink of a recession, etc., etc. So where will the money go then? I'll tell you why I'm asking this, because how I interpret it, or what I understand, is money has to find be invested, or be in a place where with risk there is return, or with less risk there is more return. That's a basic logic, right? That's the premise of risk and return. So if I'm a fund manager today globally, with whatever amount of funds that I have to deploy, I don't have a choice there, into asset class which will give me that risk return matrix. Where will I put the money? Because that will depend, that will decide you know how the markets will be driven. So your question is, where will the money go, right? Yeah, see, a lot of it has flown back to US $10, the safer aspects, right? Every people are parking money in the dollar and the US 10-year yield, safer assets with higher returns right now in the current scenario. But there is still a lot of money and a lot of liquidity out there that will have to be there in at least what would I would call is normal markets, not the actually secured markets. No. So just simply one question: if I'm a global fund manager, where will I allocate my money? Which markets do you think deserve the kind of liquidity where you can expect decent return?
because this is No. about like choosing amongst the everything is performing in a it's about everything is falling in that you have to decide where you want to put where it is falling less. So relative So, outperformance. so I think Nasdaq would be the market, and another thing, half of the liquidity will shrink because the asset prices will go down automatically. The what do you say? The liquidity will up. Okay. The fact finder who wants to answer you. No. I see. I think ED also put up his hand. Ezio put up his hand. Anybody else who wants to speak, let them speak. I will also add to Kathy's. No, you speak. And is you आप हाथ नीचे करो. Is you हाथ नीचे करो. हाँ, चलो बोलो. As Srinivasan आप बोल दो. Sir, quickly, Khyati, I think Sharad Bhai was saying it. If you try, just check this Twitter handle called Crescat Capital, considered the world's best trackers of global liquidity. The liquidity is shrinking massively. So it is like कहाँ से पैसा निकालें is the question. तो I feel आपका question उल्टा है. कहाँ पैसा डालें नहीं है question. Question is कहाँ से निकालें, and it will always be the perceived risk asset. So crypto blows up first, and Nasdaq no growth, no high growth, no cash flow blew up. Now the high growth guys get penalized. So eventually levers को भी बेच के कोकोला एप्पल को बेच के पैसा निकालना पड़ेगा. So just check out that handle. Very informative since you have a technical trading background. That's all I wanted to say. Sure, sir, Uh, that helps. I'll check that out. Thank you so much. Fact finder, you want to say something? Yeah, I mean, if there's anybody else who wants to say anything, let नहीं them. नहीं आप बोलिए ना. See, Kathy, the question I want to ask you is what makes you believe that people have to, there is so much of liquidity sloshing around that it has to go into equity asset classes? What makes you believe that the liquidity has to go somewhere? What are you tracking to suggest that? Okay. So two things. One, I agree that we are closing the tap and the money is drawing out, and like Srinivas pointed out that it's more about obviously the high risk assets will burst and money will eventually move out. But I am not very convinced on the fact that look at the quantum of liquidity we generated, and now let's talk on a relative basis. That's my premise. just No, just but think the about the liquidity, quantum of the liquidity is getting the balance sheets of the central banks are shrinking, with the exception of Japanese central bank. The other central banks, ECB and the US, they are shrinking, right? So okay, let's do one thing. There is something called the Bank of International Settlements. It comes out with a report. They track something called the dollar short. Now, what exactly is the dollar short? Essentially, the dollar short is nothing but the fact that most, at the end of the liquidity is driven by leverage, right? And leverage is provided eventually by a lender, which is typically a bank or a shadow bank. And these borrowings are done using certain instruments. Now you need to find out what is the currency in which those instruments are issued. And surprisingly, it is mostly the US dollar. So when you issue a bond in the US dollar, you effectively are short the dollar. So that is something that the Bank of International Settlements, talks about, which is the 13.5 trillion or 14.5 trillion dollar short. Now, in terms of if you agree with me that the balance sheets are shrinking, just keep one more thing in mind, Khyati. There has been a massive destruction in the value of equity And assets. and other asset classes.
you've had a lot of value destruction in agri commodities. Now think about it this way: your wheat problem in the world has not been solved in the last 1.5 months. It's not like last 1.5 months somebody grew a lot of wheat and suddenly wheat appeared, right? Ukraine problems have destroyed wheat supply. Russian war has destroyed wheat supply. Weather conditions in South America are bad. India is thankfully, at least our weather is good now, but our estimate of production is actually was revised downwards, which is why India decided to curtail our exports of wheat, because we got worried. We were supposed to produce 120 million tons, and we realized we will probably produce 105 million tons or 95 million tons, something like that. But we dramatically reduced our production. Now, why did wheat prices fall? There are protests across several African countries and South American countries for food, because there is actually no food, but the it fell because there was a unwinding of risk. Why? People had invested in crypto, institutions had invested in crypto. There's been a huge diminution of asset value over there. When you see a diminution of asset value, it hurts your equity. When your equity gets hurt, your leverage, what you do as an investor, you say, I use a certain amount of equity capital, I raise some debt and increase my total exposure. But when there's a huge destruction of value on one asset which I own, my equity gets hit. As a result, my overall exposure has to reduce significantly, which is nothing but the suction of liquidity. Okay, if you are here with me, if you agree with me that there's been a lot of destruction of wealth, be it crypto, be it equities, be it um, uh, soft commodities, right? Then you're okay. You agree that yes, there is a reduction of liquidity. Now let's go to the point about equity versus debt. When an asset allocator looks at it, he looks at it more as, where will I? We are right now getting into a potential recession in the US. There is all the evidence to say we are already in a recession. Germany, which is the bellwether of Europe, is for the first time in, I don't know whether it's 20 years or history or 30 years, is going into a current account deficit. And there is a big problem, right? Europe is going to get hit. uh, China, for the last, except for the month of June, where property sales have finally picked up. I haven't looked at the number, but at least from August of last year till May, property sales in China were down about 35%, which will impact the demand for steel starting in August of this year. So there's usually a 12-month gap between the new house sales in China versus the new house construction, and hence steel demand. So there's a 12-month lag. You have, so what I'm trying to say is that you have in such a recessionary scenario, what happens is that your earnings get cut. What you've seen in the markets till date is only a P multiple reduction. What you have not seen is a earnings cut. And I'll give you an example. I wrote a nice Twitter thread recently on the US S&P, which is a fairly broad estimate of the US 500, S&P 500. The long and short of it is, people are still building in a 10% earnings growth for the US in 2022 and 2023. Now, bear in mind the margins in the US today are 13% or 12.5%, while pre COVID they were at about 10.5%. In a recessionary scenario, do you think, and with the fact that there's so much of huge buildup of inventory, you may have heard of something called the bullwhip effect. And essentially, what happens is that retailers are filled with inventory, they are forced to sell it at discount.
Okay, and then as a result, manufacturers are forced to take price cuts and reduce their margins. So suddenly your margins of your system, which were versus pre-COVID, they were 10.5, it went to 12.5. In a recessionary scenario, one can easily argue it can go to 10.5. And if you agree with me on that, then CY22 earnings of 10.5% could potentially be flat. CY23 could be flat, right? And then suddenly you say, listen, your S&P's earnings will be flat for 1.5 years from now. And so what multiple am I going to give that? Let's give it an average of the 10-year multiple. That's 16 times, the 16.5. You multiply 16.5 into your potential US S&P earnings. And bear in mind, a flat earnings is still an assumption that your margins sustain at a very high level, right? So from that standpoint of view, somebody can justify and say US S&P can fall to 3,100. That's a 20% fall. But at the same time, in a recession, what happens? You expect bond yields to go down, right? And so when your bond yields go down, your bond values go up. So as an asset allocator, what should I be doing? I'll say, listen, let me reduce my exposure to equity because there'll be earnings cuts and potentially a PD rating, and let me increase my exposure to bonds. Now, under that scenario, I say, listen, what about the rest of the world? Listen, US becomes cheaper than the rest of the world. Why should I be investing in the rest of the world and ignoring US? I will get that money back to the US. I hope it was a long answer, but I hope I gave you a lot of things to think about. No, Yep. that's very helpful, and touched on a lot of bases, and yeah, I agree to a lot of points. But yeah, this was a good discussion. Thank you, everyone. बोलो as you hunt. बोलो. बहुत हाथ ऊपर कर. हेलो शरद सर, हेलो हाँ, एवरीवन। शरद सर, मेरे को सिर्फ कुछ 2-4 स्टॉक है, उनके बारे में पूछना है कि इनको मैं शॉर्ट के हिसाब से लिस्ट में रखूं या नहीं रखूं बस। नहीं, वो मैं आंसर नहीं दूंगा, और कुछ बोलना है तो बोलिए। सर फिर मैं पैनल से पूछ सकता हूँ, मतलब मैं रखूं कि नहीं रखूं, कि टाइम वेस्ट होगा? नहीं, नो। ओके सर, थैंक यू। आनंद सर, मेरा चांस। हाँ जी सर। अरे इतना सब एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं भाई साहब, द मार्केट्स आर, स्पेशली मिस्टर फैक्ट फाइंडर, भाई साहब द मार्केट्स आर इलॉजिकल. If the markets were logical, there was no way that the market would have gone up in spite of crude coming from $0 all the way to 110. Now, don't look at for an explanation anywhere in any of the stocks or any of the actions. Interest rate बढ़ रहा है, interest rate घट रहा है. When the interest rate was down, markets were also down. When the interest rate is rising, markets were also up. So all these logical explanations don't work. When the mood of the public is bearish, great bear market, all these arguments go for a toss. The only thing that will reign supreme is cash, and the only cash is US dollar and US dollar and US dollar alone. So all these arguments, this is good, that is that, it's basically beating after the thing has already been done. So now don't even think about crude going down will be bullish or वो ये करेगा, ये वो करेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. Even they are helpless against the onslaught of the great bear market. Please understand the conditions of the great bear market. You will see the same scenario has unfolded earlier in 2008, earlier in 2000, and it is the same thing which is repeating again. इतना explanation करने का और सोचने का टाइम ही नहीं है. अगर आप सोचते रहोगे तो मार्केट नीचे गिरेगा और आप देखते ही रह जाओगे, एक्सप्लेनेशन करते ही रह जाओगे. नहीं, आई डोंट अग्री विथ यू. ओके, अगर सामने वाला सवाल पूछता है, सामने वाला अगर सवाल पूछता है तो अपना अपना एक्सप्लेनेशन देता है, हम एक्सप्लेन करता है क्यों गिरता है, क्या गिरता है. हमको भी मालूम है, दाल में कुछ नहीं है. No issues. That was my view. नहीं, I
I respect and accept your view. राइट अपन सामने वाला पूछता है तो अपने बोलता है. बस एक्सप्लेनेशन में कुछ नहीं है, एक्सप्लेनेशन होने के बाद में बहुत कुछ दे सकते हैं, ये वो हुआ था, वो ये हुआ था. राइट नाउ द कंडीशंस डू नॉट फेवर एनी एक्सप्लेनेशन. सेम थिंग इज नॉट गोइंग टू रिपीट. What happened in 2020 is not going to repeat in 2022. It is going to be something slightly different, but it will be something which has happened earlier. That is what I wanted to say. What I want to say, Mr. हाँ Acharya, सर बोलो. no moments are same. हम्म Okay. सब मालूम. आगे ले लो. ये सब शेयर बेर पहले किधर था दीपक नाइट्राइट? अभी आया ना. अभी वो जीरो हो गया. हाँ अभी उसका एक ही लेवल है. और कुमार भाई बोलिए. Thank you, Sharad sir, and बोलिए. thank you to all the co-hosts and the listeners for being, patient in listening all these things, the gyan which we are getting. By the way, up tak to Dow Jones is very volatile from 600 to 450 and again back to 510 minus. Tomorrow, very volatile day. By the way, somebody had asked कि आज FII ने बाइंग किया है, DI ने सेलिंग किया है. भैया FII ने बाइंग नहीं किया है, FII ने अपने पार्शियल शॉर्ट्स कवर किए हैं. ऐसा भी हो सकता है. चलिए, let's come to one more important aspects, two more important aspects. Spain parliament is divided on defense spending because of recession fears. And second biggest news is Sri Lanka has admitted bankruptcy. I am very afraid इंडिया ने जितने सॉफ्ट लोन्स दिए थे उनका क्या होगा, कुछ पता नहीं चल रहा है. विद करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ $25 billion and Indian rupee down badly, I expect it to go around and kiss around 81 rupees in the very this month itself or maximum by 15th of August. अभी आते हैं स्टॉक्स के ऊपर. डिक्सन को देखा हमने 3100 से 3550 हो गया, तो आज वापस अच्छा मौका था लोगों को, कल भी मिलेगा ठोकने का, क्योंकि चाइनीज मोबाइल वालों के ऊपर ईडी हैज कंडक्टेड रेट्स. दिस इज गोइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स फॉर डिक्सन and also their production will be affected because the orders from Chinese mobile manufacturers will plunge. Take it from me, we are going to see Dixon at, for the beginning, let us put the target at around 2700. शरद भाई ने ये भी कहा था कि एनालाइज लोगों को ये भी नहीं पता डो जोन्स में कौन सी स्क्रिप है, नास्डैक में कौन सी स्क्रिप है. सर ये तो बहुत लंबी बात है. आज की तारीख में तो ये हो गया है, टेक्निकल एनालिस्ट पॉलिटिकल एनालिस्ट हो गए हैं. ट्विटर पे दिन में 100 मैसेज डालते हैं पॉलिटिकल. वो आप भी जानते हैं नाम, हम भी जानते हैं नाम, डिस्क्लोज नहीं करना है. मजा करने का है, देखने का है, जिंदगी जीने की है. सबसे अच्छे सवाल पूछे थे समर्थ जी ने, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसीज, फंड रेजिंग. सो फंड रेजिंग फॉर बैंक्स due to which this merger has happened of HDFC and HDFC Limited for reducing the cost of borrowing is going to become very difficult for shadow bankers. Shadow bankers matlab sorry, NBFCs like Piramal, Muthoot and Chola. और इसीलिए आज मैंने रिक्वेस्ट भी की थी शरद समर्थ भाई को, टेक अ पोजिशनल शॉट ऑन Chola. I am going to see a very big dip in that. Hope द वे बंडन में मैंने ट्वीट किया था 330 के आसपास की लेवल की, आई एम गोइंग टू सी 270 के आसपास. दैट हैज कम. छोला में भी कुछ हो सकता है. अच्छा, बंधन में अब क्या लेवल है कुमार भाई? नीचे जाएगा, बहुत नीचे जाएगा, बहुत नीचे जाएगा बंधन. जस्ट वेट एंड वॉच. It's only a matter of time. See, we are not technical analysts. We only believe in fundamentals. And this is the reason we are bears.
आप बात समझिए, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बुल्स एंड बियर्स। मैं बोलता हूँ वो टेक्निकल एनालिसिस पे खाली वो देखते हैं रोज का बढ़ाओ चढ़ाओ ये वो, और लोगों को ठोक देते हैं, छाप देते हैं, ये लो वो लो, 2 रुपए में 4 रुपए में काटो, स्टॉप लॉस लगाओ। हम वैसा नहीं करते। हम पूरा महीना मेहनत करते हैं, देखते हैं उनकी चाल, ये वो, शिकार एक ही बार करते हैं और दबोच लेते हैं। 400 पॉइंट, 300 पॉइंट, 500 पॉइंट, 600 पॉइंट दबोच लेते हैं। उनका देखने का रवैया अलग है, हमारा देखने का सिक्का वही है बाजार का, साइड दो है, एक बुल और एक बेयर। वी आर फंडामेंटली लुकिंग एट थिंग्स, दे लुक एट टेक्निकली ऑन द मूवमेंट्स। बंधन is going to crash, and please, if you permit me, I would be very honest with you. I am seeing initial levels of around 180 to 190. If that holds, well and good. Agar if that breaks, God alone can help Bandhan from being an RBL. सेकेंडली आपने कहा था कि सेकेंडली आपका सवाल था समर्थ भाई की जो लोगों फ्लैट बांध रहे हैं, बिल्डर डिफॉल्ट कर रहे हैं, लोगों को घर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये वो। सर मैं क्या बोलता हूँ, ये फ्लैट बेट का आप डीएम कर लो ना। ओके सर, नो प्रॉब्लम, नो और प्रॉब्लम। कुछ है तो बोलिए। हाँ, नेक्स्ट सर, डॉलर में इतनी मूवमेंट आई है, which is very, shocking for Indian community and Indian bankers. There's a very big issue now which has cropped up is, हम प्राइवेट बैंक्स की बात छोड़ देते हैं, since Indian banks are also into forex and forex lending and all these things, buying, how much treasury losses are they going to carry on their balance sheet as of 30th June? Nobody had predicted dollar to cross 79. The treasury losses on PSU banks will be massive, massive, massive. I'm just not able to understand whether they will carry that on their balance sheet or RBI is going to intervene by reimbursement of those losses in some form of QE, some form of help in forex. That is the point which I wanted to say. But then, if these forex losses are carried, treasury losses are carried on their balance sheets, I am seeing a massive fall in all Indian PSU banks. No. Sir, I think your facts are wrong on this. Okay. Banks don't take, banks are not permitted by RBI to take exposure on currencies, which is an issue that banks were restricted from at least 8 to 10, maybe 12 years ago. So I don't see that risk that you're talking about. Systemic risk नहीं है. Yeah. Sir, we will see that, because I will tell you. नहीं sir. I will just elaborate with a simple example. Banks are allowed to buy gold. Banks are also allowed to discount forex bills. Banks are also allowed to purchase or sell forex. There are many banks being into, I should not be disclosing professional community. There are banks which have taken huge exposures. And so they take exposures on behalf of corporates. The corporates are the problem, but bear in mind the corporates. There are certain very big cases where the hedging has not been done. Please, I don't want to elaborate. No. Mr. Kumar, banks cannot have an exposure. Period. वो client का होवे नहीं होवे वो छोड़ दीजिए. Banks per se cannot have an exposure in currency. Sir, then how they do disclose in their annual reports every year this much is the forex gain? That is in trading. Once, sir, on one hand you say there is no forex exposure, and on other hand you say it is trading. You're talking about the profit that they make on foreign currency. Profit and losses also. Yeah. So the profit that they make on foreign currency is when they can trade, but then at the same time, remember, they buy and sell on behalf of their clients.
right? Sharad sir and So look at Sharad sir and RBI. fact finder, I will RBI. DM you certain other facts. चलिए 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 So बस कीजिए markets are going to, according to me, markets are very weak, very very weak, and I have also today responded to समर्थ भाई कि भाई कुछ भी ठोक दे तो भी कमाएगा, कुछ भी ठोको. Markets are not going to stay here. This was just month end expiry का वो था, momentum था. Let us wait for the results and you will see from 10th of July or 12th of July, you will see how the cabinet starts shrinking and skeletons come out of it. Thank you very much, sir. Thank you. जावेद भाई. थैंक यू कुमार भाई. जावेद खान. जावेद भाई, जावेद खान नहीं है. सादिक जी बोलिए. हाँ सर, कैसे हैं सब लोग? बस ठीक है. बस आपकी मेहरबानी सर. सर मुझे दो चीजें पूछनी थी. एक, आपने पहले बताया था ना एसजीबी में हमको अगर कहीं पे पार्क करना है तो एसजीबी में कर सकते हैं. तो आई वाज, अभी तो मैं माइंड बना ही रहा था कि एसजीबी ले लूं या फिजिकल ले लूं, लेकिन अभी सर ये लास्ट 3-4 दिनों से वो एक न्यूज चल रहा है युगांडा में $12 ट्रिलियन वर्थ ऑफ गोल्ड माइन इनको मिला है. तो हाउ दैट्स गोना प्ले, अभी हम अगर कुछ होल्ड करना चाहते हैं तो हाउ दैट्स गोना प्ले इन फ्यूचर. तो वो एक पूछना था सर मुझे. डूब जाएगा गोल्ड. तो फिर He's joking. मत लेना. नहीं, सीरियसली मत लेना, राइट? हाँ, मत लेना. यार, he's joking, यार. You think you just find a mine and it just suddenly comes to the surface immediately, is it? I mean, I'm not sure. I mean, the news is very. अरे अखबार में पढ़ते हो सब सही होता है क्या? आप भी अक्ल लगाओ ना. युगांडा जैसा कंट्री भिखारी है, उसको इतना मिलेगा तो क्या करेगा? वो नहीं है, फालतू का न्यूज पढ़ता है यार. फालतू का न्यूज नहीं पढ़ता है सर. मतलब अगर हम इस तरह की न्यूज आई एम सेइंग द न्यूज इज फालतू. Yeah, I understand that, and that is what I'm not saying you are reading. हाँ. क्या पढ़ने का यार. अरे ये नहीं होता है सादिक भाई. और अपना सीट ट्रेंड इज डाउन. Best investment is SGB. Put your money there. It gives you a return. And also, if dollar rupee moves, गोल्ड उधर कितना भी घटेगा, यहाँ पे 51,000 ही रहेगा. ओके. तो और मेरे हिसाब से एसजीबी का रिडम्पशन होगा ना, वो तुम फिजिकल मांगेगा ना गोल्ड, वो नहीं देगा तेरे को, प्रीमियम दे देगा. बोलेगा चल निकल तू इधर से, तो फायदे में रहेगा वो. अच्छा. और बताओ सादिक भाई, एक्सरसाइज मत करना, वो क्लॉट होता है. हाँ सर, आजकल मैंने वैसे ही बंद कर दिया एक्सरसाइज. अच्छा किया. अभी नेक्स्ट मंथ से. और सर एक चीज पूछना था, हमारे फैक्ट फाइंडर सर से पूछना था कि वो किस किस चीजों पे शॉर्ट है. मुझे अगर डीएम या नहीं he will not answer that question. चलो ठीक है सर, इतना ही पूछना. थैंक्स. थैंक यू. हाँ, ट्रेडिंग डी. हाँ जावेद भाई, 1 मिनट में लेता हूँ. और ट्रेडिंग डी. Good evening, everyone. Sir, starting with my last week's view that I gave for Reliance, my targets. नहीं, आपका आवाज बराबर नहीं आता. Starting with the last week's view on Reliance, sir, अभी ठीक है? So that target has been achieved of 6 to 7% down. So if now Reliance goes more down, I'll be on sidelines if it goes around 2,300. If so, there I need to see the closings and all, then I'll come up with that new view. And sir, for HDFC,
as expected, it gave a bounce. Now my short level is 1340. सर जी आपकी आवाज नहीं है बराबर, आवाज नहीं आती है। कैन यू रिकनेक्ट प्लीज सर? Yes, sir. Sure. ओ या जावेद खान। शरद भाई, समद भाई एंड एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर पॉलीकैप वाला तो मतलब पक्का है, न्यूज़ कंफर्म कर दिया था सेकंड टाइम भी, बट अभी ये क्या है ना, कंपनी सब मैनिपुलेशन करता रहता है। अभी मतलब हो जाएगा दूध दूध पानी पानी नेक्स्ट, अभी इस महीने में उसका रिजल्ट है जुलाई में, सो लेट्स सी उसका मतलब टॉप लाइन मतलब सेल्स तो पूरा बहुत डाउन हुआ है ये क्वार्टर में, पता चल जाएगा अभी रिजल्ट आएगा, बट ये डाउट है कि दे कैन मैनिपुलेट, कोई छोटा कंपनी है मतलब ये लोग करते हैं मैनिपुलेट। दूसरा कुछ था नहीं इतना खास, एशियन पेंट का भी एशियन पेंट का भी सर वही था न्यूज, बट वो इतना अच्छा सोर्सेज से नहीं था, सो इधर शेयर नहीं करना है। जावेद भाई, हाँ हमको आपको एक सवाल पूछना है। हाँ सर। ये जो पॉलीकैब है उसके मुकाबले में कौन सा बड़ा कंपनियां है? सर पॉलीकैब के मुकाबले में अगर इस फील्ड में लिखते तो आई थिंक हेवल्स इज बेटर, बिकॉज हेवल्स का मतलब इलेक्ट्रिकल एफएमसीजी में उसका मार्केट शेयर भी अच्छा है, काम भी अच्छा है। नहीं। हाँ ये मतलब आप बोल रहे हो हेवल्स है, और प्राइवेट में कोई है कि नहीं? प्राइवेट में सर बहुत सारे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारे हैं इधर। नहीं, बड़ा वाला में तो सर देखो एक आरआर केबल है, वो लिस्टेड नहीं है, उसका एक ही कंपनी लिस्टेड है, राम रत्न वायर करके है। आरआर केबल बहुत बड़ा कंपनी है, बट वो लिस्टेड नहीं है। जो एंटाइटी है जो मेन केबल सेगमेंट में, दिस इज वेरी बिग प्लेयर, बट वो लिस्टेड नहीं है। उसका एक अलग से एक छोटा यूनिट है राम रत्न वायर्स करके, वो लिस्टेड है। बाकी आरआर केबल इज अ बिग प्लेयर, वो लिस्टेड नहीं है। और कोई? What about Finolex? Finolex is good. It has a diversified business. Finolex ka it is they separate their PVC pipe business and cable business. Finolex is also good. It is among market leaders. What were you saying about Asian Paints? Asian Paint, I have yesterday someone told me, but that source is not that much reliable. Like the Polycab, the person who told me was very reliable source. That's why I share in this space. But Asian Paint, the person who said the things about is declining in sales and all things, but its inputs are not that much reliable, that I can say here. So Javed bhai, you're talking about dealer checks now? No, the guy just tell me that its sales is drastically declining. Okay, and actually in this quarter, the monsoon season and all this, their sale is the first quarter and second quarter is historically not good for Reliance. Especially second quarter because of monsoon and all things. The first quarter there are YOY sales will decline according to that source, but I am not reliable with what that source is. But the guy who said about data of Polycap, that was solid source. Okay, that's why I said here. But that's one thing, the company can manipulate the numbers when they are presenting their results. शाहिद भाई, Yes sir. अपनी आंखें हैं ना, हाँ, और सब लोग की आंखें हैं सर। मेरे को तो सिंपल, सुनो, ओके। तो अकाउंट्स में कुछ भी गड़बड़ होता है ना, वो पकड़ा जाता है। हाँ, वो पकड़ लेता है सर, बट ये बड़ा कंपनी है, इन लोगों का कोई वो नहीं है। अभी देखो मेरे को तो क्लियरली दिख रहा है। पर्सनली मैं खुद जितना पॉलीकैप का माल उठा रहा था, मैं 20% मेरा माल उठा रहा हूँ, जितना मतलब पिछले साल मैंने उठाया था
अभी इस फाइनेंशियल ईयर में कुछ काम ही नहीं है, और अभी मेरे को आगे आउटलुक भी नहीं दिख रहा है। मैं HPCL और उसमें काम कर रहा हूँ, अभी हमको आगे आउटलुक है नहीं, नया नया प्रोजेक्ट आने वाला नहीं है, रिटेल आउटलेट्स नया बनने वाला नहीं है, स्ट्रिक्टली गाइडलाइन आ गया। उनका जो एग्जिस्टिंग रिटेल आउटलेट्स है वहाँ पे भी BPCL एंड HPCL आर स्ट्रगलिंग फॉर सप्लाई, यू नो, दे आर डिक्रीजिंग देयर सप्लाई एट 40%, यू नो। कुछ कुछ एरिया में हाईवेज पे डीजल अवेलेबल नहीं होता है। HPCL और BPCL स्पेशली, ये दो कंपनीज के पंपेस तो, रिलायंस एंड यू नो SR तो अभी वो नायरा हो गया, उन लोगों पे भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो रहता ही है, बट मतलब ठीक है। पॉलीकैब का बात करते तो उसका हम लोगों का मतलब जो है वो डाउन हो गया, बिकॉज मेरा खुद का कंपनी का सेल डाउन हो गया है, नहीं, अभी आप 30% हो बोलते गया। हो आप 20% उठाया माल उसका। हाँ 20% ही माल उठाया है, बिकॉज ओके, तो मेरे दूसरे पास ने 40 उठाया होगा, किसी ने 50 ओवर उठाया। हाँ ओवरऑल जो मैं जिस सेक्टर में काम करता हूँ उस सेक्टर में सभी लोग का हालत खराब है, मतलब ओवरऑल सबका 35% टोटल बिजनेस हो गया है। कंपनी ने जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है उनका कैपेक्स ड्रास्टिकली पिछले 3 मंथ में ड्रास्टिकली डाउन हो गया है कैपेक्स। दे वर वेरी एग्रेसिव, 2017-18 में एग्रेसिव था, इवन पोस्ट कोविड वी डिड वेरी गुड टर्नओवर एंड वी डिड वेरी गुड वर्क्स। अभी कोई कैपेक्स हो नहीं रहा है, एंड फ्यूचर में नेक्स्ट 6 मंथ कोई कैपेक्स दिख नहीं रहा है सर। गुड, थैंक यू जावेद भाई, थैंक यू सो मच। ओके सर। और आप शुक्रवार को आइएगा। हाँ श्योर। ओके अरविंद भाई। Yeah, hi, Sharad sir. Hi. Nice to hear you after so long, and nice to hear listen to everyone. मेरा question, can I audible? Yeah. Yes sir, yes sir. Question was related to gold. Obviously, inflation के time पे, and sometimes like this, we always find gold to be a good hedge, and it normally does give a certain kind of return. But currently, it's been subdued. It's not. It's been kind of going nowhere. I understand, because obviously because interest rates are higher, so that probably is playing into it. But in the long run, how do we really see gold going forward from here? Because once inflation comes down, then how will gold prices react to that, and how is that an investment hedge? No, see, two things. You said it's a hedge against inflation. So how do you measure the return or anything? It is just a hedge, plain and simple. एक बात मैं समझता हूँ, मेरे को बहुत टाइम हो गया, जब भी 8-9 साल का था पिताजी गुजर गया था, तो हमारा जो घर है वो शेयर पे और गोल्ड पे ही चला। उस टाइम वो 100 रुपया तोला था, तब से वो अभी भी है मेरी मदर के पास में। सो आई थिंक वो ऊपर नीचे का छोड़ो, रखो गोल्ड, वो सूख पाओगे। एक ये सब कचरा पट्टी शेयर वेयर मत रखो घर में, उड़ जाओगे। नहीं सर, शेयर्स को तो I used to say this 10 years back के long term investor, I never honestly personally don't believe in being a long term investor, because there is way too much fluctuation and uncertainty which probably I personally cannot handle, so I don't believe in that. So मैं No, कोई I basic do चीज invest in आप shares. जैसे gold है या land है, No, I do invest hard in assets. shares, and I love shares. I love equity. I die for equity. I breathe, die, everything equity. But those are different set of equities. Not this kachra patti, Reliance and Polycab and all that nonsense. तो सर ये क्वेश्चन बहुत मेरे को पूछने का बहुत थोड़ा कीड़ा भी है आपसे कि तो आपके हिसाब से व्हाट इज अ गुड कंपनी और अ गुड शेयर जिसमें सही में मतलब चांस से इन्वेस्ट करना चाहिए? अब 5-6 कंपनी का नाम डाला था, आपको मैं DM कर दूंगा, और भी नाम चलेगा सर, नाम 10 का भी बात कंपनियां है, आप मतलब आई डोंट मीन टू और से भी 10-15 कंपनी है, सबका नाम दे दूंगा।
इसका नाम तो ठीक है सर, दैट इज आई अंडरस्टैंड, वो आपका पर्सनल, बट जस्ट तो अंडरस्टैंड और करने क्या के चाहिए? जब कोई कंपनी देखते हैं कि नहीं इसमें हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलिए। मैंने कहा सर, आप जब कंपनी जैसे आप नॉर्मली बहुत सारी कंपनीज को आप बोलते हैं कि ये कचरा है या सही नहीं है, सो जो कंपनीज में आप इन्वेस्ट करते हैं उसमें आपका व्यू क्या है, आप क्या देख के उसमें फिर आप बोलते हैं कि नहीं ये सही है? उसमें मूवमेंट नहीं होता है, उसमें प्रमोटर नहीं खेलता है, और सबसे बड़ा बात है उसका जो वो प्रोडक्ट है। जी, मैं सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ही लेता हूँ, और मैन्युफैक्चरिंग मतलब ये अपने इंडस्ट्रियल कंपनीज लेता हूँ। ये बैंकिंग सब कुछ नहीं लेता हूँ। नेवर एवर इन माय लाइफ आई हैव बॉट। सो कोई तो भी जो टैंजिबल कंपनी जो कुछ चीज सही में बनाती है या कुछ प्रोड्यूस करती है या उस टाइप का। हाँ हाँ, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। सर समर, सर यूके फाइनेंस मिनिस्टर ने रिजाइन किया है अभी, ब्रेकिंग न्यूज है। ठीक है, फिट्सी डाउन 3% प्लस। नहीं वो तो बंद हो गया फूड से। फ्यूचर्स सर, फ्यूचर्स। अच्छा ओके, अमित भाई बोलिए। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो सर जो मेरा न्यूट्रल स्टांस हुआ था 4-5 दिन पहले, आज खत्म। अगेन आई एम ऑन द बेयर साइड कंप्लीटली, फुल फोर्स। एक छोटी सी कंफर्मेशन मुझे चाहिए थी, जो कि शायद अभी नहीं मिली, माइट भी कल मॉर्निंग में मिल जाएगी होपफुली। So again, our bear run start below 15,800. Again 14,180 target open for now. पुल बैक जितनी मुझे उम्मीद थी सर आ गई। लास्ट टाइम भी मैं कह रहा था कि मैं थोड़ा सा न्यूट्रल हुआ हूँ, बुलिश तो बिल्कुल भी नहीं हुआ हूँ। आई एक्सपेक्टेड कि 16,200 शायद आएगा, लेकिन 16 पे ही सेवा समाप्त होगी। सो अगेन डाउन साइड स्टार्टेड, बेरिश व्यू है। ऑटो पे थोड़ा सा मैं अब बेरिश हो रहा हूँ, मैं भले बुलिश था। और टीवीएस मोटर हमारे पास शॉर्ट है, मतलब मैं कर रहा हूँ एंड प्लानिंग भी है। स्ट्रक्चर खराब लग रहा है मुझे। और एक स्ट्रक्चर है एसआरएफ का, मुझे बहुत बुरा वाला ब्रेकडाउन दिख रहा है, सो आई एम शॉर्ट ऑन इट एसआरएफ। फिलहाल मेरे पास 2 अपनी पोजीशंस हैं, क्लाइंट्स के पास भी हो सकती, तो मतलब अभी 2 हैं। बाकी अब फ्रेश देखता हूँ कल परसों क्या मिलता है। अभी आज तो खेल शुरू हुआ है एज आई बिलीव, तो बट मतलब बिल्कुल जो था न्यूट्रल स्टांस टर्न इन नेगेटिव। बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा शायद अभी है, जो कि शायद कल मॉर्निंग में वो भी मिल जाएगा। बैंक निफ्टी में यार, बैंक निफ्टी में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं। तो स्टॉक में सर मेरे पास जो 2 है, आई सिंपली रिपीटेड कि मेरे पास ये 2 है, एसआरएफ क्या भाव पे है सर? सॉरी, क्या भाव पे बेचा है? एसआरएफ मैंने बेचा है आज लगभग, आई एम जस्ट टेलिंग विद स्पॉट लेवल। मैं आपको बता देता हूँ, स्पॉट लेवल वाज 2150। एक बात बोलता हूँ यस सर। अमित भाई, फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, यस सर, यस सर, एंड आई नो यू आर अ टिपिकल ट्रेडर। यस सर, थैंक यू। कभी इधर कभी उधर, समझा? हाँ जी, हाँ जी, ये समझो एसआरएफ है, हाँ जी। तो परसों नहीं होगा, आप किसी और में होंगे। ओके, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं मतलब आई एम एडवाइजिंग यू यार, बिल्कुल मतलब बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब आप मेरी बुरा नहीं बोल रहा हूँ, नहीं नहीं एडवाइस कर रहा हूँ। सर, सर आपका जो एक्सपीरियंस है उतना मेरा एज है, सो आई नहीं डोंट नहीं, टेक इट अदरवाइज इवन। सुनिए। यस सर, यस सर। एक लॉट एसआरएफ बेचो हाँ जी। और छोड़ दो उसको, छेड़छाड़ मत करो अपना पोजीशन के साथ। ओके अरे सर, आजकल 2150 पे है, मैं छोड़ देता हूँ। मैं 100 रुपए अभी भी इन द मनी हूँ, मैं छोड़ ही देता हूँ। आप बोल रहे हैं, I'm just नहीं simply नहीं, telling 100 रुपया नहीं, अब 1500 रुपया इन द मनी हो जाओ ना, वो तो ही हाँ, बड़ा पैसा बनेगा। बिल्कुल सर। ये 50 रुपये में तुम्हें ना 2 में रुपया आएगा, 3 में लग जाएगा, हाँ नेट हाँ, नेट बिल्कुल जीरो। बिल्कुल 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 उससे बिल्कुल। अच्छा, वो आई एम नॉट सेइंग एसआरएफ, एनी स्क्रिप्ट यस सर। आपका चॉइस का। अगर आपको लगता है ब्रेकडाउन है, ये है वो है, बेच के बैठा रहो। वो यस। ब्रोकरेज क्यों देते हो? अपना बीपी क्यों बढ़ाते हो? मत करो, मत करो ऐसा। ओके। एक लॉट बेचो ना,
और हाँ गलती एक से ही किया है, ज्यादा किया भी नहीं है, एक ही किया है एक्चुअली। नहीं, और गलती से भी टीवीएस वो सब में मत जाओ, वो ऑटो में, उसमें कुछ नहीं मिलेगा, खाली हाँ ब्लड प्रेशर मिलेगा, वो घटेगा डेफिनेटली, पर हाँ बहुत मार मार के घटेगा। हाँ देखो वैसे ही था वो तो, उस पर रडार पे अभी, था मेरे, एक दिन का पुल बैक के बाद वो शॉर्ट अप था तो आज किया था। अरे भाई यार मत करना यार शॉर्ट, ये शॉर्ट टर्म वाला क्यों करते हो आप लोग यार? एक दो लॉट बेच के बैठ गया कि 10 लॉट, इतना पैसा आएगा कि रखने को जगह नहीं होगा। ऑल राइट सर, तो ऐसे एसआरएफ ठीक है ना, एसआरएफ को होल्ड करूं, टीवीएस को उड़ा देता हूं कल मॉर्निंग में, एसआरएफ हाँ, इज फाइन, होल्ड करूं। ऑटोमोबाइल में मत जाओ, ओके सर। इंडियन ऑटो में मत जाओ, ये टाटा मोटर्स है ना, हाँ हाँ ये अभी मत बेचो, वो 300 टूटेगा ना, बेच देना उसको, ओके फाइन। और 25% घटने के बाद बेचना। नहीं वो तो सर था भी नहीं रडार पे, इसी को था, से अरे मैनिपुलेशन था। एक अरे यार तेरे को एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हाँ ऐसा मैं नहीं समझ बोल। गया मैं समझ गया, ऑटो के साथ छेड़छाड़ नहीं करने का, आई गॉट अ पॉइंट। और मैं वापस बोलता हूँ सबको, एफएनओ मार्केट में तेजी मत करो, एफएनओ मार्केट इज जस्ट टू हेज एग्री, एंड इट इज 100% नॉट एग्री। एट ऑल। आप तेजी करते हो तो 35% टैक्स लगता है उसमें। बिल्कुल आप बिल्कुल। आप आप बी ग्रुप में आप लेते हो माल, तो 15% ही लगता है टैक्स। सर मेरे को लगता है ना, मतलब अगर आपको लॉन्ग करने हैं ना, तो जस्ट गो इन डू द कैश ना, मतलब फ्यूचर्स हाँ तो वही बेसिकली मैं बोल रहा टिपिकल हूँ। फॉर शॉर्टिंग के लिए है ही है ना, कि कैश में आप हाँ शॉर्ट कैरी नहीं कर सकते हो इंडिया में, हम्म, तो जस्ट गो द फ्यूचर एंड शॉर्ट इट। अगर शॉर्ट, देखो सर प्रॉब्लम क्या है ना, शॉर्ट इज नॉट अ नेचुरल इंस्टिंक्ट फॉर एवरीबॉडी, शॉर्ट करने नहीं के लिए भी डिफरेंट कैलिबर चाहिए, वो सबके नहीं बस नहीं, का नहीं सुनिए, होता है। एक बात सुनिए। यस सर। लास्ट टाइम मैं बोला था तेरे को, ऑप्शन बेचेगा तो दोबारा नहीं है नहीं बात। सर मैंने बंद कर दिया, नहीं बेच रहा हूँ पक्का पक्का छोड़ दिया, नहीं, नहीं बेचा। और अभी दूसरा बात बोलता हूँ, यस सर। निफ्टी बैंक निफ्टी का नाम नहीं लेने का, तेरे को करना है कर, वेस्ट ऑफ टाइम मनी एनर्जी ब्लड प्रेशर एवरीथिंग, तुम बाथरूम भी नहीं जा सकता है निफ्टी का सौदा के साथ। हाँ सर, बैंक निफ्टी के साथ नहीं जा सकते, निफ्टी के साथ तो चले भी जाते हैं, बैंक निफ्टी के साथ तो बिल्कुल नहीं जा सकते हाँ तो क्यों, निफ्टी के साथ तो चले भी मैं जाते तो दोपहर में आराम से नींद लेता हूँ 2 घंटा, हैं। और बाजार बंद के बाद भी सोता हूँ। सो दिस इज नॉनसेंस, आई वेस्ट मनी यार। आप हम्म। आप 5 लाख रुपया कमाया, नेट में आया 10,000 रुपया, क्यों चार्जेस इतना लग गया, यस छोड़ो यस यस। फालतू का ट्रेडिंग। ओके एंड चलिए सर एक व्यू चाहिए था अब सर, ये जो क्रूड का जो आज स्लम्प है 10% का, सर एनी एनी रीजन आपके कुछ नॉलेज में है, क्रूड का ये क्या 10% का सर्किट, क्या रीजन, एनी आइडिया? रिसेशन, एक ही वर्ड, रिसेशन, 10% डिप्रेशन। लोअर सर, ये तो हाँ डिप्रेशन में जा रहा था, रिसेशन से तो डिप्रेशन बन गया ये तो। डिप्रेशन डिप्रेशन, डिप्रेशन, या एग्जैक्टली, इट्स अ द मैटर ऑफ डिप्रेशन ग्रेट नाउ। डिप्रेशन 1929। यस यस, इट्स लुकिंग तो लाइक चल इट इज मजा क्वाइट कर, सीवियर, बाई 10% गोल्ड, loss, बाई even गोल्ड, everything, बाई गोल्ड, gold, silver, everything cracked. क्रैक क्रैक क्रैक। Okay, okay. Thank you. ओके चल सर बाय। रोहित सर को इनवाइट भेजा है, रोहित श्रीवास्तव को। हाँ भेजो। पहाड़ी बैंकर, वाह वाह पहाड़ी बैंकर, बोल क्या खबर लाए, बोलो पहाड़ी बैंकर, बैंकर जी बोलिए। बोलिए ना। आवाज आ रहा है आवाज? हाँ आ रहा है, पक्का आ रहा है। सर मैं ये बोल रहा था, कुछ एक आर्टिकल पढ़े थे कि रशिया चाइना ये सब मिलके ओपेक वगैरह वो सब करके डॉलर को टॉपल करना चाह रहे हैं एज ए वर्ल्ड ट्रेड करेंसी, इंटरनेशनल ट्रेड करेंसी। तो सर ये इसका क्या है, और अगर ऐसा है तो फिर सर डॉलर बढ़ क्यों रहा है, उसका डिमांड क्यों हो रहा है? अगर वो आर्टिकल सही बता रहे हैं तो डॉलर का डिमांड क्यों हो रहा है? नहीं, वो आर्टिकल एकदम बराबर है। ओके, उनका मानना है कि डॉलर इंडेक्स 120 होएगा ना, बाद में टॉपल करेगा, तब तक वो चुप बैठे। ओके 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 सर, ओके। और कुछ पूछना है?
तो सर ये पूछना था सर, ये कोई चांस है क्या कि अगर यूएस और इंडिया थोड़ा, पहले हमारा मार्केट उनको देख के चलता था, अभी भी चल रहा है, कभी किसी पॉइंट पे डीलिवरेज हो सकता है कि हमारा अलग चले और उनका अलग चले? उनके यहाँ रिसेशन आने वाला है जैसे चल रहा है, कोई जरूरी है कि हमारे यहाँ आएगा ही आएगा या क्या है? ये थोड़ा नहीं 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 नहीं, आप क्या बोल रहे हो कि अपना मार्केट देख के वो यूएस मार्केट चलता था? नहीं, यूएस को देख के हमारा चलता था, यूएस यूरोप बाकी सब जगह का। कभी सर देखिए, उनका इकोनॉमी एजिंग है, सब कुछ डेवलप्ड कंट्री है, हो गया है। अभी इंडिया में चांस है, इंडिया में डेवलपमेंट का बहुत चांस है, क्योंकि आप दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर को बना के बोल नहीं सकते कि इंडिया का विकास हो गया। अभी बहुत जगह है जहाँ पे बहुत कुछ होना है, हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ग्रोथ का गुंजाइश तो होना चाहिए इंडिया में। यूएस में नहीं, वो जब भी होएगा तभी वैल्यूएशन मिलेगा, अभी से क्या है? ओके, ठीक है सर, ठीक है, ओके। So I want to add one thing. Sorry, speaker, souls of. Uh, I I don't know why you believe that the U.S. is a bad economy where things have peaked out. If I'm not mistaken, they have a fairly young population themselves. So not like and bear in mind that US has an advantage that they are today the biggest import, which is they import energy, and they today are as far as crude oil is concerned, they only import 1 million barrels or 1.5 million barrels out of the 20 million barrels that they consume. Secondly, on gas LNG, they have excess LNG, and by 2027, US will be bigger than Russia, and probably bigger than Qatar. Yeah, it could be the second largest LNG producer in the world and supplier in the world. So think about the US. They will be an energy behemoth or a conglomerate who's exporting energy. Plus they export software. So your outlook for US should actually be very, very strong. थैंक यू सर। एक्चुअली मेरा बस मतलब मैं जानना चाह रहा था कि क्या है, मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि यूएस पिक्ड आउट हो गया। आप और आपने ऐड किया सर, बहुत नॉलेज मिला मुझे सर, थैंक यू सर। बाकी लोगों से भी सर लोग कुछ बताएं तो अच्छा रहेगा सर। बेचो। Yes, Mr. Rohit Srivastava. Good evening. वेलकम सर। Good evening. Welcome, Rohit. Rather good night होना चाहिए। नहीं, tricky है, interesting situation है। See, I mean, I think everybody, at least in this group, is on the long-term bear camp. But I try to jump both ways. I think last time also I was discussing the potential for a counter trend bounce. We've had a 1,000 point, almost 900 point rally, I think, from 15,100 to 16,000 today. And while it might look like things are falling apart, I still don't feel we are ready for the next leg down. So I will give it some time. Even though, I mean, things like oil, copper, and all are down today, that's the commodity section is basically down. That can be read both ways. It can be read into as a positive rub-off also in the short term, though longer term implications of falling commodities are a weaker economy, but shorter term implications can be that the pressure is easing. But don't you think inflation is just one part of the puzzle? Surely. So I'm just highlighting that is the sentimental part of it right now. But rest of it is all broken. Supply chains are broken. Demand is broken. So I am talking now. See that part. So that is why I said that we are all clear on the big picture. Okay.
If you're clear on the big picture, things are bad, ये होगा, recession आएगा, Fed ये करेगा, तो सबको पता है. Everybody knows it. So what everybody knows is already in the price. So that is where the trade setups come into play. So I'm only talking the trade setup right now. Okay, whether the trade setup is for a immediate fall from tomorrow, 500 point गिर जाएगा, my answer is I don't think so. It will fall, but not right now. Not right now when everybody thinks so. Now we can argue. Now we can argue whether what is everybody and how do we measure everybody. No, Rohit bhai, today morning it was 16,000. Everybody was bullish, including myself. And now we are saying it's bearish. No, it's not true. We are still bullish only. Okay. And having said that I'm bullish, I expect the markets to go down by 200-300 points tomorrow. In fact, I said it might go down for 200-400 points, where I will buy again. Correct. And with a stop loss of 200. And then if it goes down, I will double my position. Then cover again. मजाक कर रहा था सर. See, from That is a good one, man. from my experience, Rohit bhai, I'm saying one thing. Swear on God, I don't look at charts, or rather, I don't know how to look at charts. I'll be very honest. But आज जो moment हुआ कि 850 वाला 1610-20 हुआ कैश में, और वो घट गया जो भी हुआ 780, और first of all 780 was the आपने expiry rate. Our expiry was 780. Next day was down by 25 points. Monday it went up to 835, and today 835 वाला वापस 780 और thereabouts आ गया. मेरे को लगता है कि 200-300 पॉइंट आराम से निकलेगा, क्योंकि ऑयल इज डाउन. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट talking of stocks per se, but Reliance will be down a big time. And LIC is a buyer in Reliance. Let me tell you that. But then also it will go down. ONGC will go down. BPCL will go down. And technology will go up. आज अगर ये आप एक्सेंचर का देखते हो भाव, तो it is almost a 52-week low. So you will not have support from technology also. Now, Lever, ITC, how much will they pull it up? So this is the reasoning as such. And side market, Rohit bhai, if you see, it's in shambles. So only 5-6 stocks are afloat. The rest of the market is down. I hope you see my point. No, I do. I'm not in disagreement on the weakness of the market or the breadth, or that any bounce is counter trend. I am only not sure whether any counter trend bounce that was looking like happening for the last 10 days is over from a short term perspective. That's all. And that is for, of course, for me, charts of different, various indicators are primary. Looking at the long short positioning, or the PCR, or all of those data points, when they reach an extreme, I sort of back off from anything. And so that is my observation, that sentiment is at an extreme negative. And
that usually cools off before it gets worse again. Nothing moves in a straight line. So I'm just not sure whether the weak environment is ready to get weaker. How the rotation will drive up? We have seen so much rotation. तो कुछ ना कुछ गिरता है फिर कुछ बढ़ता है, तो something makes it happen, but sentiment has to move from one end of the pendulum to the other. If everybody is on the same side, then it doesn't move. And the data suggests right now to me that we are still there. We have not completely eased even after this 700-800 point rally to 16,000. The sentiment has not completely gone away from the extreme. So, which is why it is not ready for a sell-off. It may not move up fast, but let's give it time. That's all. नहीं रोहित भाई, I have a different theory. We are long, we are short, okay? Yeah. Hey, you are short, I am long. That's it. But 100% equity is long. These are only the futures market, wherein 80% of the people don't play. Futures market, 80% of the people don't play. Based on our transaction, how can you determine that you are short, but you are holding the equity or the underlying? How will I know? So I will think you are short, but in fact it's only a hedge. So, and if my analysis is right, the short side in the market is hardly 5%. Believe me, short जो भी होता है ना, end of the day वो square up करके ही निकलता है. ज्यादा शॉर्ट नहीं रखता है कोई. वो किसी में ये 2 साल जो तेजी चला ना, अच्छा मंदी वाला साफ हो गया, और मैं भी साफ हो जाता था. मैंने आधे में छोड़ दिया तो बच गया. तो शॉर्ट जो भी होता है ना, वो एंड ऑफ द डे नहीं रखता है आज के दिन में. और अभी गलती से निफ्टी 14,000 हो गया सपोज, आई विल बी हेवीली शॉक, क्योंकि अपना एक थियरी है कि 25% नीचा जाता है ना, वो चीज को बेच दो, कोई उछाला नहीं आएगा. मतलब माइनर वो ठीक है आएगा, और 50% घटता है तो भाई साहब आता है वो डीमार्ट वाला, और फिर 25% बच जाता है तो भी हम आता है कि ये तो वो पूरा उठाने का ही है. सो दिस मार्केट हैज स्पॉइल्ड अस. This 18 months of bull run has spoiled us. मैंने एक ट्वीट डाला था, जब मंदी आता है ना, कोई पैरामीटर काम नहीं करता है. I don't know. I mean, see, everyone has his experience, his way of analysis, his way of looking at things. Correct. This is my opinion, sir. Yeah. So I have been. I mean, the studies I am talking of, I am doing for now. I am also doing for 20 years successfully, seeing that it works more or less. There are times when, see, there's nobody's going to be right all the time. There are times I think it will bounce and it doesn't bounce. But there are reasons to think that when I should be short and when I should not. Yes, there are some people who are perpetually long. There are some people who manage their portfolio more actively. I think I would call myself a relatively active portfolio manager, and I don't manage anyone else's money. So it's when I speak my own book only. And in that sense, I announced it on Twitter, having gone 60, 70, 80% cash since April, 17,200. I've only added back some positions in the last 10 days, which means from there I'm not short anymore.
But the question to me is when do I do that? Do I do it today? Do I do it because it's falling from 16,000 today morning? I need some kind of confirmation and surety that it is going to go to 14,500 in this particular move. It could go there 1 month later. And if it's going to go there 1 month later and in the interim go back to 16,600, I do not have the nature to hold on to a short trade from here to 16,600. So I would wait for that sign that it is a better setup or not a better setup. So all I'm trying to say is that नीचे आप 14,200 आएगा बट आई एम नॉट श्योर अभी आएगा तो थोड़ा रुक जाता हूँ. रोहित जी आई थिंक मेरे सेटअप में केस ये है कि 16,600 भी आ सकता है और 17,000 भी आ सकता है क्योंकि मंदी सबके दिमाग में उतर चुकी है तो इसलिए मार्केट नहीं गिरेगा. Can और I ये add something मैं on this? सिर्फ गट फील से नहीं बोल रहा हूँ, मैं डेटा से ही बोल रहा हूँ. ये डेटा जैसे if I just go by FII short positioning, not just in India, trader short positioning in US also, 2 हफ्ते से CFTC positions जो रिपोर्ट हो रही हैं S&P में, S&P फ्यूचर्स में शॉर्ट है, FII का इंडिया में शॉर्ट है, and this is the highest short position they have had since the pandemic. तो ये जब तक कट के जीरो नहीं हो जाएगा तब तक गिरेगा नहीं मार्केट. मेरा ये सिंपल थियरी है. कहीं लेवल टूट जाएंगे तो कंसिडर कर लूंगा कि ठीक है गिर गया. अगर 15,500 टूट जाता है तो ठीक है, और जब तक नहीं तोड़ रहा है आई विल नॉट शॉर्ट दिस मार्केट एज ऑफ नाउ. No, Rohit bhai. But I trade long and short, so let me be clear that is my style. I agree with you, but in my case, I don't play Nifty, Bank Nifty or frontline stocks. अपने तो चिंकू पिंकू मारता है. Rohit ji, there was something I wanted to add about the construct of the run that you've seen from 15,000, 100, 200 जो भी था लेके यहाँ तक. Just look at the way the index has moved. कुछ भी नहीं हुआ है. पूरे दिन ऐसे लटकता रहता था, flattish और within the 100 points range. फिर लास्ट में एक आधे घंटे में कोई ना कोई आके उठा देता था. Either it was to be banking or Reliance or whatever. तो ये हमेशा का, and then Reliance of course is much lower than where it was at 15,200. तो यहाँ पे if you look at the room to go up or room to fall, but the beauty of the market is what you know कि अगर तुम confirmation के लिए wait करोगे ना वो निकल जाएगा तुम्हारे हाथ से. तो यही है कि तुम्हारे पास जब भी रिस्क रिवॉर्ड अच्छा दिखता है तब ठोका करो. दैट्स द ओनली वे टू डू इट. स्टॉप लॉस तो है ही. I can say कि जब रिस्क रिवॉर्ड अच्छा दिखे तो लिया भी करो. of course. हाँ, but कहाँ पे so दिख रहा है मेरे को बताओ यार. it is currently our bias only. करेक्ट वो तो ठीक है. रिस्क रिवॉर्ड अब कहाँ दिख रहा है अच्छा? जस्ट अ क्वेश्चन. सॉरी, रिस्क रिवॉर्ड कहाँ पे दिख रहा है अच्छा खरीदने के लिए? बहुत जगह दिख रहा है. एक एग्जांपल दे दो. IT sector. No. I know you will not agree. You will not agree because it completely sounds bizarre. But right now you look at it. Right now, what is down? The Dow is down. What is up? The Nasdaq is up. Why? Because only commodity stocks are down. And the first thing which happens when oil and commodities fall is the interest rate expectations drop. Okay, so your bond yields are down. And that was primarily the reason that was causing US tech stocks to get hammered. This is your most immediate trigger for a tech rally. No, but see, जो आज हुआ है क्रूड के साथ 10% का जो फॉल हुआ है, तो this will have a very big impact on Reliance and considering the weightage of Reliance on our index. So you asked me particular stock, no? So I'm saying IT sector. So that is not Reliance. IT is not equal to Reliance. तो आप Reliance बेचो, मैं IT खरीदता हूँ. चलो देखते हैं क्या होता है. नहीं एक मिनट अभिषेक. और कल वापस आते हैं इसी फोरम में. नहीं. You say our technology and Nasdaq is up. Okay. I'm saying Nasdaq may be up, but Accenture is down 3.17%. And Accenture is a tech services company. Yeah, I'll fact find. No, I wanted to ask Rohit, have you been able to do any analysis of
where this DIIX of mutual funds money is coming from? I mean, it was quite massive last month. It was very massive the previous month, right? This is not mutual funds, right? Because they don't have that kind of money. But it is showing under DII, you're saying? Yeah, it is showing under DII, but DII is a mix of mutual funds and insurance. There's a big divergence, right? Because mutual funds get an inflow of maybe 25,000 crores. DII is about what, 50,000, 55,000 crores. So, that's a lot, right? So then you've answered it. Then it's probably other sources, which is insurance, as you're saying. Then. But why I'm confused is because there is at least during the IPO, LIC had said specifically that they will not cross a certain threshold of equity exposure. Now, have they just gone ahead and debunked that? Then it's different. I just wanted to, because see, the only reason why the Indian market is where it is because DIs have just been buying and buying and buying. And this is not mutual funds who have been buying. Traditionally, it's always been the mutual funds. And this kind of aggressive buying, at least in the last 20, 15, 16, 17 years that I have looked at the markets, I have never experienced this ever. This is the first time. It's like really strange. Yeah, no, I think this puzzle is one which we will only know some other point of time. This discussion over who's selling it, why FIs are selling or why DIs are buying has gone on. Why foreigners selling is very obvious. That I think they will continue to sell. It may be obvious today, but when the market was rising post pandemic and they were still not net buyers is also surprising to me. This is the first time in the history of our data that they were not only in the cash market but even in the futures market. If I go back to prior to 2016, at every stock market peak they used to be long by almost 200 to 300,000 contracts. Post 2016, they never have a long position more than 100,000 contracts or 125,000 contracts. So it surprises me. You have a bull market where index doubles or more, and the FI still don't have a position more than 120,000 contracts on the upside. So even in the futures market, they are not buying. There's a reason there's a reason for that. What has happened is that the share of India dedicated money has reduced as a proportion of total FI money. That might explain why while you look at FI numbers, you have to understand that guys who will short also could be. I mean, they're more likely to be an India dedicated guy rather than a non-India dedicated. I'm not saying non-India dedicated guys don't short; they do definitely. But the likelihood of an India dedicated person also getting involved in that manner is higher. No, it is a mystery for sure. This local buying. But yeah, I am really not trying to answer that bigger question because it doesn't really help me in taking a market decision. I don't take my market decisions based on why large DII money is coming in or going out, because irrespective of their buying, the market went up and now the market is going down. So what's more important for me to know is how does the market move relative to certain data points. And why I was referring to the index future short position of FIs is because that has a history of being associated with market lows. Even not only this month, you can look back at the month of May, 134,000 contracts short by FIs by mid of May. And by end of May, you had a counter trend bounce in the market. So those kind of readings make more sense as a trader to me. Then investment, we have to discuss at a different level. Right now, we are agreeing that we are in a bear market. If we agree that we are in a bear market, then the only issue is what are the tools I'm going to use to navigate the ups and downs, or do I really want to bother? I could have one situation, which like last time also Sharadji was saying,
short the market, forget it, and then we'll see after 6 months. So that's fine if you are okay with sitting through all the sell-offs, retracements, and so on. But if I see a market that falls 20%, then it bounces back 10%, retracing half of it, and then falls again, I think there's a way to trade around those things as well. Why should I sit through every bounce back and retracement? And so that's another approach. Question is, do I want to take that approach or not? If yes, then I have a way to do it, and that sort of tells me that right now is not the time to be adding to that position. If I'm already holding and I'm going to sit through it, is different. The other thing is, I'm just looking at Accenture, since that was the discussion. It made a low of $268 on the 20th of May. It made a low of $269 on the 16th of June. And today it has also made a low of 269. So this is the third time we are coming to 269. Now, unless we really break 269, I'll think it's a triple bottom and it's going to go up from here. That's my immediate thought. No, I fully agree with you. At 268, it's a buy. Okay. I also agree with you. But in comparison, this is IT services and consulting. And what we have is only IT services. Yeah. So the earning is less. See, if you understand what I'm trying to say, कि TCS 2700-2800 आएगा सर, पक्का है. And the body language in the last result was horrible of TCS. Yeah. I'm also a technology guy, but now I'm bearish. Rose, any thought on the rupee? The rupee is short term getting overbought, long term, long way to go higher. I also just want to add one thing on the crude oil crash that you saw today, right? Mix of it is basically if you look at the last time around, the Dixie index was at these levels was back in March 2020. So there has been some, and there is something called the euro dollar basis. Okay, that's been rising up quite a bit. And it's very close to what it was. This is essentially demand for the dollar. That's called the euro dollar basis, and that is some sort of an indication of risk off. And I think that plus a mix of news from all countries across Europe, that farmers are going on protest. UK cars and buses are going very, very slow on the road as protest for such high oil prices. So it seems like and then there is a interesting discussion where there's a possibility that the US will so this is something that everybody should kind of keep it watch on. There is some internal demand saying that why should US export produce of their fuels. Honestly, I don't know why, because I don't know how it makes sense, because in a case they are net importers. But if they were to do that, for instance, then WTI will crash in the US while Brent goes up. Now, when WTI crashes and Brent goes up, the raw material for the US refiners becomes super cheap. They then get super cheap refining product, which they then use to try and capture the refining margins in Europe and parts of Asia. That will result in a collapse in refining margins but higher crude oil. So your Brent goes up but your refining margins crash, which is something that I don't think the market has factored in. At least that's something that's a policy change that can surprise potentially, that's being discussed. Anyway, I think this crude oil is crash is more related to VAR related selling because of the changes you're seeing in the currencies.
and lots of protests across Europe. चलिए और अभी कौन है? आदित्य, आपको कुछ पूछना है क्या? deltwix.eth अनम्यूट करके बोलिएगा। जी सर। सर मुझे तो बस यही पूछना था कि जो आप आईटी के बारे में जो बात कर रहे हैं, तो सर ये जो रुपी जो है वो 72 से 79 हो गया, तो इसका आईटी पे कोई असर नहीं आएगा? इसमें भी उनको नेगेटिव ही जाएगा मतलब रिजल्ट में? क्योंकि उनको 10% तो ऐसे ही मिल गया, मतलब अगर उन्होंने सेम डॉलर कमाया तो उनको 10% एक्स्ट्रा गेन तो ऐसे ही मिल गया, तो ये फिर भी ये नेगेटिव होगा? ओनली ऑन द नेट अमाउंट। उनका खर्चा भी डॉलर में होता है, इनकम डॉलर में होता है, खर्चा भी डॉलर में होता है। Okay, sir. So let me just add one part. There is something called cost of living adjustment, COLA agreements when you do a deal with your customers. So when there's a significant currency advantage that Indian IT companies get, then what happens is that they try and pass on. They have to pass on, at least in time and people contracts, they have to pass on this currency benefit to the end customer. So, which is one of the reasons why over the last several years, you've, except for COVID, you've never really seen an improvement in margins of IT companies over the last, except the COVID period when visa costs collapsed, travel costs collapsed, client entertainment costs collapsed, other operational costs collapsed because people were working from home and not from office. So if you remove all of that, margins have really not benefited despite the currency. And if you will see the results of TCS, that will be out on Friday evening. You will not propound this theory. Hello? Okay, sir. And sir, one more point that I had to add is that I have been listening to the space and many are only talking about the crude falling. But sir, if you see copper, soybean, a lot of Everything. hard Everything commodity is stock. falling. Yes. So is it not a good time for equities if the commodities are falling then? Yeah, it is very good. Tomorrow morning you jump in and buy. Otherwise, you will not get the shares. You should buy shares. Or buy Reliance, buy ONGC, buy Hindustan Copper. Good for you. So whatever sir is telling, short all of them probably. No, because पी रेशियो होना चाहिए। 12-15 के ऊपर पी इक्विटी कम आ गया। तो पहले भी यही भाव था, तो इंडेक्स 7,000 का था। ये जो अपना बुल रन है ना, it is because extra liquidity had come into the market and now the local DIs are supporting the market. इसके लिए अपना बाजार इतना नहीं घटता। Okay, boss. Yes, sir. Yes. Thank you. Okay. तो पक्का दुखी होगा। इक्विटी मत ले। सर जरूर सर, यस नहीं लूंगा। थैंक यू। अरे ले लेना बिंदास। प्रीति यस बोलो।
नहीं Good बोलना? evening. Good evening. नहीं, good evening, sir. How are you, sir? Fine. I was listening to all of you. I think अभी तो बहुत confusing state है. For now, I have always been telling it is always a sell on rise. So वही 16,000, 16,200 आना था, वहां से sell off आना था, which has happened. I think we have discussed it in the last space. And again, the same massive sell off. Bank Nifty was comparative much weaker, which we have seen today. And बैंक निफ्टी आई थिंक 33,000 से और नीचे जाने का है इन केस tomorrow again the same scenario will happen. I think we are opening flat tomorrow mostly. And for me, I think commodities can fall more. Crude का तो अभी has just started. I think natural gas will also go ahead and it will also touch around 360, 370 odd levels. I am short on natural gas on a positional basis. This is my view. I'm not asking anyone to take the trade as per that. A strong disclaimer. And stocks may, I think healthcare is something which can see more downfall. Apart from that, FMCG जितना strong दिख रहा है उतना है नहीं. I think we can see more fall in FMCG for now. I don't know what was a pullback for, but we can see a strong sell off in FMCG stocks as well. So for me, as of now, I'm looking to be short on the stocks like Metropolis, Lalpat Labs, Apollo Hospitals, and stuff, and also on FMCG stocks. Stocks gone. Bank Nifty is comparatively much weaker. I believe Bank Nifty will drag Nifty much lower, and this time if Nifty breaks the levels of 15,300, we are going much deep down. So I think people who are on long side should only be long once. I have been telling this. I think on every single space I go or everywhere I write that 16,211 and is my level, which 16,211 level is something which has to be watched out for. Above that, on a weekly closing basis, is the only long that we have to make. Otherwise, it is all a sell on rise everywhere. So it's a clear sell on rise positions for now. So I was the one who has not captured the bear rally. I'll be honest. I was long till 15,800, and we have seen huge fall after that, which I wasn't able to catch. I'll be honest in telling what haven't what I have done and which what I was not able to catch in for. So these are my views. I have gone wrong as well, in my analysis. So for now, this is what I'm eyeing at. So if somebody is going ahead and following my views, please take your own analysis and work accordingly. So अरे I'm कोई नहीं करेगा यार. नहीं क्योंकि क्या होता है सर कि फिर नहीं कोई नहीं, कोई और ट्रोल करे तो छोड़ो ना, डिलीट मार दो. नहीं आई लीस्ट केयर अबाउट ट्रोलर्स नाउअडेज. पहले लगता था कि क्यों ट्रोल हो रहे हैं, बट लाइक आई एम लीस्ट बॉदर्ड नाउ. लेट देम डू, बिकॉज मुझे एक चीज समझ में आ गई, जिनको कोई काम नहीं हो सिर्फ ट्रोलिंग ही कर रहे हैं, एंड दे हैव डन नथिंग इन देयर लाइफ. सुनिए, ये जो निफ्टी का आप बात किए ना कि 16,000 ये वो, तो ये मई महीने से है, लास्ट मई महीने से यही रेंज में है निफ्टी. तो तकरीबन 13 महीना हो गया एक ही जगह पे वो 1,000 2,000 इधर उधर 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 ही घूम रहा है, अपने को उल्लू बना रहा है. नहीं, दैट्स ट्रू, पर मेरा बहुत बायस्ड व्यू था. आई वाज वेरी बुलिश, बट बाय द टाइम कोई वांदा नहीं, वो तो यस्टरडे था ना. अभी छोड़ो ना, आज का बात करो. आज का बात और कल का बात बस. और मेरे जैसे के लिए 1 साल का व्यू बस. मार्केट सर लास्ट टाइम भी यही बोला था. रिलायंस इतना फॉल डाउन हुआ था, तो उसके करंट निफ्टी हैज taken a fib retracement at 0.618, and I think below उसके 0.5 का जो retracement है, which is around 14,700 14,800 levels. So I think अगर उधर से fall होता है, so that's the immediate levels that we can see.
So for now, there is no long, there is no long, which I am, this is my view. I will go above position, I'll go long positionally only above 16211 dot levels on a weekly closing basis. That's it. And Bank Nifty is very weak. The closing today was hyper weak. I think that is dragging market more lower, and people should be very cautious on financial services as well. Like all the stocks which are related to financial services. RBL, I think again, pata nahi wo, it will fall to what all levels it has gone like anything. So in around pandemic also it was trading at around 160, 165 levels, or abhi to it is half of it. So God knows that is going to zero or do what, like it's another Yes Bank in making. So I think people should be very cautious on, and I think Sharad sir ने बिल्कुल सही चीज बोली कि अभी equities खरीदना is not the right idea, and he has told this to everyone who were trying to do the same since past 2 months. So thank you to him that he has saved many people for doing wrong in नहीं from नहीं, doing wrong कोई कोई, investing. अरे जिसको लेने का है वो लेता ही है, मेरे बोलने से वो थोड़ी नहीं लेगा। हाँ अरे समझ but भाई then I बोलो। think जिनको समझ में आया है, at least they have stopped. This is what I'm thanking, नहीं, and कोई नहीं स्टॉप करता है। हाँ समझ, वो क्या बोलते हैं तुम? आरबीएल बैंक का जो बात हुआ ना, तो ऑप्शंस में मत करना, कोई किसी को करना है तो, बिकॉज अभी मार्केट वाइड पोजीशन 76% हो गया है, तो वापस बैन में चला जाएगा, तो उसमें ऑप्शंस का प्रीमियम घट जाता है, तो फ्यूचर में करना है सर, अगर आरबीएल बैंक करना अरे है। छोड़ना, जिसको जो करने का है, तू काय को एडवाइस देता है? ऑप्शन भी लेगा ना तो प्रीति, कम से कम अब 50 रुपया कमाएगा ऑप्शन में, या प्रीति, फंड। Preeti, I want to ask you a question. Yeah. What made you change your okay? When you discovered you made a mistake on your bullish stance, Mm-hmm. what was that changed your view? Mm-hmm. If you could just highlight that. Yeah, so I'll tell you. So when we were trading around 15,800, I was considering it as a very smart support. I was considering it as a very stiff support, and I will be honest, I never thought that we'll be going that deep down. Apart from that, um, when we have seen a huge sell off on a single day, that was a day wherein I realized that, if I would have not had that biasness on my view, I would also had made money, since I did not lose anything. But then again, I would have made something huge on that day. But just because I was very stagnant and I wasn't flexible with my views, I thought that I have lost a good opportunity. So then I decided to again. So I have a homework that I do on every. I'm more in stock option buying and stock option stuff. So on that day, I'm not into indexes more. I trade stocks, as I said, more. So on that day, I particularly got into all time frames on indexes on Nifty and Bank Nifty, and it was the entire previous levels which were marked on the screen. So I went in, I sat on the screen for almost 1.5 2 hours. I marked all the levels, and then I actually realized that I had actually made a mistake. I was trading on a levels which were not up to the mark probably. And second thing, that I had marked levels as per my convenience, because I was bullish. I had made the trend line and stuff, which was actually made everywhere when where the support was. So I never actually have realized that I was trading on a biased view. Then I actually sat on the system. I opened the screens, and I found that this is a mistake. I actually deleted everything. I went ahead and draw actually a new chart, and then I realized that this can happen in the market for now, and I have to actually not be so much conservative, keeping the same views. And then things changed for me. So sometimes we don't do our homework properly. There are so many mistakes which we commit positionally, as well as in intraday markets. So this is where I realized, and then since then I have constantly been changing my views in terms of indexes, specifically changing my views in the terms of the intraday levels. So I actually draw a new chart every day.
on a different time frame, and I try to understand from where we can make a new support or from where we can get a stiff resistance even if you want to short. So I'm more of an intraday player instead of a positional player. So that's how I actually changed my view, and it helped me a lot, to be honest. And for now, as I said, I'm very clear, and I'm very, 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 very clear on my view that this is how I'm going to trade. So even if somebody comes, even God comes and tells me that you learn 1 crore, change your view, I won't do that, because that's how I've made my mind now. प्रीति, मेरे से वो एक भी मिस्टेक नहीं होता है, मेरे से एक भी मिस्टेक नहीं होता है। और पूछो क्यों? मैं होमवर्क ही नहीं करता हूँ, मैं चार्ट नहीं देखता हूँ, कुछ नहीं देखता हूँ, खाली फंडामेंटल, और बेच के सो जाने का। तो मिस्टेक भी होती है तो वो रेक्टिफाई हो जाती है 1 महीने के बाद। तो ऐसा ट्रेडिंग करने का ना, काय को इंट्राडे करने का, फॉर व्हाट? इंट्राडे इज अ वेरी टीडियस जॉब, नोबडी मेक्स मनी, यू ओनली इनकर चार्जेस। आप देख लेना आपका लेजर, खाली चार्जेस ही होगा, उतना ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। I'll share you my ledger, you can see that. Yeah, okay. I don't only incur brokerage, I earn as well. So there's nothing like I just that the habit of clinging to a view in case if you're positional can cost you big. So it could be suicidal. So if somebody is so a person like you who has that kind of view can do that positionally, but I am maybe I am not that stiff on my views sometimes, and I'm not that flexible as well. So I try clinging to my own views on that sense, and I do that. So I don't know, sir, मुझे positional में फिर then I go for OTMs, which doesn't fetch me a lot. Sometimes it's a lottery, but then not every time. So वो risk काय को लेने का? That's my view is. Okay, DJ, you have anything to say? Yeah, good evening, everyone. Sorry I joined late. I was out. No change in my view on the market. Our foreign buddies, FIIs, had been shorting the market yesterday when it was 15.7. They again shorted when it was 16,000 today morning. So the fall was expected. Surprisingly, they actually shifted out of their shorts in index futures and they started writing weekly calls. So that keeps the short term upside in check. So I don't think we go any up higher from here. And we should be sliding down slowly. Though I'm not very confident it's going to be a sharp and big fall, but yeah, we should get down to 15,650 at least, and then we see where how it proceeds from there. Yeah, that's it from my side. No, but DJ, you said you are an engineer, no? Yes, I am. I was. Okay. तो 15,650 के नीचे नहीं आता है क्या फिगर? आएगा, अभी मेरा फर्स्ट टारगेट तो वो है। अरे टारगेट है बराबर है, लेकिन गिनने को आता है क्या 15,650 के नीचे? 15,650 के नीचे आई थिंक 13 to 12,000 is open for me, and I won't be doing any long-term investing before it reaches there. So that's be open about it, no? Yeah, absolutely. The only thing that concerned me was a bit when these FIIs, they switch from futures to writing weekly options. They're not expecting a big fall, because in a big fall, you'll make more money with futures than with writing options. So, I mean, they can change their position anytime, but in my experience, when they write weekly options, it's a more slow grinding move than an abrupt, sharp fall. Yeah. Okay. Anybody? Last call. बोलिए सर, दिख भाई। सर ये मुझे ये पूछना था, अभी हम लोगों ने तो यहाँ की बात कर ली है, मुझे एक स्टॉक जो टेस्ला है उसके बारे में पता करना था सर।
और मैं चाह रहा हूँ कि अभिषेक है, समर जी है, फैक्ट फाइंडर है, श्रीनिवास जी है, तो ये सारे लोग अगर उसके ऊपर कुछ रिसर्च करके बता सके कि अब जब भी हमको अच्छा चांस मिलेगा घुसने का, तो कैन वी बाय ब्लाइंडली टेस्ला। मुझे मेरे एनालिसिस से ऐसा लग रहा है कि इट्स अ मतलब इट्स गोना बी अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी टेस्ला में नेक्स्ट 10 years के हिसाब से। तो वो एक मुझे पूछना रह गया था। 10-20 हजार शेयर लेगा क्या? हाँ सर, ट्रक लगा के लोड करना है। एनीबॉडी? सर ऑप्शंस तो अवेलेबल है, टेस्ला क्या है, CYB अल्फाबेट है, माइक्रोसॉफ्ट है, वाई टेस्ला ओनली। सर टेस्ला नेक्स्ट लेवल है। टेस्ला को ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के ऐसा नहीं देखना है। उनका FSD ड्राइविंग जो आ रहा है और उनका बोरिंग कंपनी में आपको पूरा डिटेल्स तो है DM पे शेयर करता हूँ। यहाँ पे तो अभी थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, लेकिन इट्स अ डिफरेंट कंपनी, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि एवरीवन शुड इन्वेस्ट इन टेस्ला। हमारे यहाँ से अभी से ही मतलब टेस्ला में हमको पोजीशन बनाना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन अगर आगे फॉल है तो फॉल में तो इट्स मतलब सोने पे सुहागा जैसा। अभी मैनेजमेंट के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है टेस्ला में, मैनेजमेंट के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। सर मैनेजमेंट ही तो उसका सॉलिड है, एलन को छोड़ के और क्या है। एलन का काम करने का आप तरीका देखो, उसका कॉन्फिडेंस देखो, और मतलब ये सारी चीजें मैं आपके साथ DM में शेयर करता हूँ, और आप लोग भी अपनी तरफ से एनालाइज करो। मेरे ख्याल से बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है अपनी वहां पे। Sadik, I want to ask you a question. What is the price of Tesla stock now? टेस्ला स्टॉक अभी फिलहाल इट्स अराउंड 700 680 समथिंग में। अभी अभी मैंने लिया, अब 15 आधे घंटे पहले। Okay. Do you? So I wanted to take you back to 2000. 2090 it was for yeah 2020. 2020. $40. 2020 August. It was about 300. Yeah. Yeah. What changed between 2020 August and 2020 December? It See went the up from. amount of, yeah, see the amount of cars they are making, see the amount No, of no, no. batteries. I want to Yeah. ask you, Mhm. 3 months, what changed in 3 months between 2020 August and 2020 December? November. It That went I up don't from know. about $300 to $850. हम्म। What changed? I mean शायद उनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के वो लोग कितने कितने कार्स बनाने वाले हैं, या कितनी बैटरीज बनाने वाले हैं, या फिर वो No, माइनिंग I'll इंडस्ट्री tell में। you what changed. I'll tell you what changed. या It got added to the US S&P 500 index. या There was ESG ने ETF, बात करी। there was ETF buying that happened. या There's no liquidity in the stock, so the stock went up. That's what happened. My point is that the reason why I went back to you about that stock price is because from there 2020 September, August, and we are in 2022. We're not even 2 years out. Think a doubling of the stock price is justified, assuming that ETF was not included, because over a period of time that ETF impact fizzles out, right? Uh, so do you think, and the reason I'm asking you, is it worthwhile assuming that they should double their market cap? Because of three reasons I'm asking you this question. The first reason is the outlook for battery prices has changed a lot, right? Battery price inflation has become an issue in the industry. That was not an issue back in 2020, when the assumption was that battery prices will keep falling by 10% every year. Second change between 2020 and today is that Elon Musk has said that he believes that the Tesla car cannot serve entry level customers and mid level customers. It is going to be more of a premium offering. Earlier, the assumption was that Tesla could offer very cheap cars. Today, the Tesla, I think it's a Tesla 3, right? Which is the cheapest one, version 3. Yeah, Yeah. version 3. Yeah, and how much is that cost? About 50,000? Yeah, 51,000 Yeah. something. Is he introducing any cheaper versions than that? If he's not addressing the masses.
Okay. I mean, So that he's jacked to the capacity. उनका बर्लिन का जो फैक्ट्री है, उनका शंघाई फैक्ट्री है, they are jacked to the capacity. They are, I mean, look, working you're round the you're clock. talking about long term. No, you're talking about long term, right? We're not talking about the next 6 months. Yeah. Yeah, my point is that he's changed his view, saying that he साधु will ये not. क्या लगा रखा है यार, टेस्ला किसी के पास है नहीं इधर, इंडिया में किसी के पास नहीं है, तेरे पास है, हम लोग को क्यों परेशान? सर मैं बोल रहा हूँ आप भी ले लो। सर सादिक जी, सीएनबीसी की न्यूज सुनो, टाटा मोटर्स इज द न्यू टेस्ला। टाटा मोटर्स को छोड़ो सर, बहुत पीछे है ये बैटरी ये खरीदेंगे टेस्ला से अगले 1 साल में। ये टाटा मोटर्स वोटर्स जो है ना, इनको बिल्कुल से भूल जाओ आप। टेस्ला अरे आई वाज जस्ट किडिंग सादिक, आई वाज किडिंग। चलो Don't you सादिक जी, understand? Sadik, This topic is no more valid. नो सादिक जी, हम लोग ले लेंगे टेस्ला, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टॉक मैं भी आपको बोल देता हूँ, डाउ का कैटरपिलर पे ध्यान रखिएगा। कैट पे, ठीक है, कैट पे यार प्लीज, मैं सादिक भाई बोलिए। रिक्वेस्ट है, प्लीज ये सब यूजलेस बात मत करो यार, टेस्ला ना कैटरपिलर ना, क्या तुम कितना ले लेगा? चलो सर टेस्ला मेरा मेरा ऑल इन जाने का प्लान है, इसलिए मैंने और लोगों से भी पूछा। यही मेरा रीजन था, सारे लोगों को बोला कि जैसे इनका एनालिसिस मेरे से बेटर है। आई एम न्यू इन द मार्केट। नहीं, हाउ मेनी शेयर्स यू विल बाय? सर अभी बोल दूं यहाँ पे ऐसे ही क्या? हाँ बोल दो ना। और कुछ 500 शेयर लेने का आइडिया है। मतलब 500 शेयर लेगा तो कितना? $3 लाख हुआ। हाँ 2 करोड़ रुपया हुआ। हाँ, दो हाँ जी। ले डालना बिंदास, क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या तो उसको सादिक, उसको डिक्सन को ठोक देना 1 करोड़ से। अरे मुझे डर लगता है, अभी मैं उतना अमाउंट देखने का आदी नहीं हुआ हूँ ना, बहुत बीपी हाई लो। नहीं, आप विशाल भाई से कंपेयर करो, फाइनल बनाओ। This discussion is getting nowhere. Please. Anything else anybody wants to say? Sir, can you just permit me one point? I just want to just one point. Yes. Okay. Always. No. This is only to Sadik. Sadik, just keep in mind that Hyundai and Kia today are the second largest seller of EVs in Europe. First being Tesla. You need to why don't you just look at those stocks? Okay, because those guys are gaining market share in Europe on EVs. सर दे आर far behind than टेस्ला। मुझे और ये डिस्कशन यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करना है। आई विल टेक यू टू डीएम। मैं डीएम पे चीजें शेयर करता हूँ आपके साथ, आप देखिए वो, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। Sir, no request pending right now. Can we close down? Yes, please. Okay, thank you.